हम 2 सेकंड रुका तो 5 मिनट में करेंगे। हाँ, तो चलो गाइस क्या है, स्ट्रीम मैं चालू आपको हो गई है। वेलकम बैक टू आवर स्ट्रीम। मैं हूँ जसमोहन और मेरे साथ हमारे पुराने फ्रेंड है विनीत। हेलो करो विनीत। हेलो। वो 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकते हैं स्ट्रीम चालू होने के लिए। दोस्त के साथ खेलने के लिए I वेट नहीं take my होता। meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. तो सर तुम टाइम Mixing कितना infused लगाते हो? water with अरे ice is the हो most जाता है, अभी effective. स्ट्रीम करने का ऐसा टाइम लगता ही है ना। वैसे ये लोग है ना बहुत दिलदार नहीं हो गए। इन्होंने कितना 300 काबुल। प्रीमोजेम दे दिया इवेंट पे। वो तो हर 2.1 टाइम पे देते हैं। और सब 300 लोग मिला। उसके लिए वेट करते हैं। कल हाँ कल डिले हो गया इवेंट, तो सब लोग यही तो बोल रहे थे, अभी हम वेट कर रहे हैं। हमको हम्म। एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए सर्वर एरर की वजह से। डिलियन इज अनेबल टू एंटर, तू घुस नहीं सकता क्या? हाँ, क्योंकि मैंने फोन बंद रखा है, मैंने चालू ही नहीं किया। तो कर दे फिर चालू, आ जाओ हमारे गेम वर्ल्ड में, खेलते हैं साथ में। तेरे उधर आओ। मैं आ जा। तेरे में आता हूँ, तुमको जो जो ठीक लगे। आ जाओ वो। अरे नहीं, वो भी सिंगल प्लेयर इवेंट है, नया वाला Swift and कोई merciful अरे टू हाँ, प्लेयर हो गया। एक नया इवेंट आया ना। into the wind. वो फैंटम फ्लो का, वो सिंगल प्लेयर है। वो कर दिया तूने? मेरा हो गया वो फुल डिफिकल्ट। वो मैंने छोट फुल डिफिकल्टी पहले ही, पहले इससे वो फुल छोटा सा डिफिकल्टी। इवेंट है ना। Submit for नहीं judgment. इवेंट है, 7 या 8 चैलेंजेस है, और हर एक में 60 प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो 420 प्रिविलेजेस मिलते हैं टोटल। ओके। ये लोग प्रिविलेजेस से अच्छा खासा दे रहे The हैं। wind knows me. हाँ क्योंकि इनको पता है ना पब्लिक। 2270 प्रिविलेज और 10 विशेष, Time to मेरे को go. 23 विशेष के आसपास दे रहे हैं 2.1 में। अरे इन लोगों को पता है ना अभी बाल आने वाली है और पब्लिक बाल का वेट कर रही है। और लिटरली पता है मेरा एक दोस्त है, उसने गेम जस्ट अभी स्टार्ट किया। हाँ, उसको हम्म। उसको वो चीची मिली 90 विशेस पे। हम्म। बोल रहे हैं मैं हम्म। बाल की वजह से गेम खेलना स्टार्ट किया, मेरे को बाल चाहिए। ओहो, मतलब सबसे प्रॉफिटेबल होने जोंगली के बाद नेक्स्ट मतलब सबसे प्रॉफिटेबल पब यही होने वाला है। हाँ मतलब बाल बैनर। पब्लिक बाल के लिए गेम खेलना स्टार्ट करिए, ऐसा हो रहा है। हम्म। तो बहुत प्रॉफिटेबल रहने ओ वाला भाई, उसका उसका वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छा है। है। तू मेरे वर्ल्ड में है कि क्या? मैं तेरे मान रहा हूँ। ओके, चलो क्या करना है? मेरे को एक मिनट देखने दे, तो मेरा रेजिन कितना जोंगली है मेरा। तेरा हाँ अभी तक एज आया तो अनलॉक हुआ होगा नहीं। हाँ, रुक मेरे को देखने दे, मेरे को असेंशन के लिए क्या करने का है। किसको मेरे असेंशन करने के लिए? मेरे को एक तो आइस वाले चाहिए, ठीक है। एक डियोना को तो करने का है ना। किसकी बात कर रहा है? डियोना डियोना। अरे डायोना को। ओके तो चाइल्ड और कचिंग हो चुकी है। चिंचू को करने का है मेरे को, ठीक है। चिंचो मेरा फुल्ली बिल्ट हो गया। बट लेवल असेंड 11, करने का है मेरे को। लेवल 11 नहीं, 11, 11 की 12, 12 सॉरी, लेवल 12 Leaves दोनों। around, and I know और just the tune to accompany them. If you wish to hear उसका it. 80 पे अटका के रखा है मैंने उसको, 90 नहीं किया उसको। चल एक बार इसको करते हैं अपन। क्या कहते इसको हैं, ओशियनिड को। ओशन और हराना है, तो रुक मैं आया मेरी स्पेशल टीम को लेके। अयो, तेरा अभी भी एजा खोला नहीं है। मेरा नहीं खुला है अभी तक। एजडा करने का तो तेरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। बट कलेक्ट कर लिया ना तूने एजडा का मटेरियल? एजा का हम दोनों ने कर दिया, वेडनेसडे को वही कह रहे थे तब। वही। मैंने तो मंडे को ही कर दिया था एजा का मटेरियल। रुक मेरी कहानी वो भी सब डीपीएस पे, उसको डीपीएस करते थे। सब डीपीएस बिल्ड क्या है? हाँ, उसको मैंने सब डीपीएस बिल्ड पे Clear डाला water था। all around brightens the heart. सब डीपीएस बिल्ड के अंदर मतलब क्या डाला, क्या है तूने उस पर आर्टिफैक्ट्स और वेपन? नहीं, आर्टिफैक्ट सेम ही रखे उसके, पर एनर्जी रिचार्ज वाला वो दे दिया उसको, तो उसका बर्स्ट नॉन स्टॉप स्पैम, क्योंकि उसका बर्स्ट स्पैमेबल है ना। ओके, तो 15 आगुआ का भी। सेकंड कूल डाउन, 15 सेकंड बर्स्ट, तो बाय द टाइम बर्स्ट पहला खत्म होता है दूसरा बर्स्ट रेडी हो जाता ओके, है, एनर्जी रिचार्ज डाला तो। Time to go. ठीक है। कौन ले रहा है तू लड़ने के लिए? मैं कहाँ नहीं हूँ।
तू गान्यू ओशन राइड के सामने एक ही ट्रम्प कार्ड है मेरे पास। तो मेरे पास कचिंग है और हीलिंग के लिए या तो बेनी ले सकता हूँ या डियोना ले सकता हूँ। तू जिसको लेना है ले। डायोना को ले चल। डायोना को ले गया। डायोना वो मर जाएगी तेरी, नहीं रहेगी। हाँ वो बिल्ड नहीं है ना प्रॉपर्ली। बेनी ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे वो अभी गाड़ियों को लिया है तो मतलब मुझे जोंगले को लेना ही पड़ेगा, ऐसा है वो। चल ठीक है एक बार डियोना पे ट्राई कर। अगर होता होती तो मैं डायोना को ले लेता। Or a fool who trespasses upon अभी the waters of the अभी मैंने एक बार जाओ सिलेक्ट किया है ना Coveting कंप्लीट करने के लिए। shapes पहले जाओ को बिल्ड pure करूँगा, water उसके बाद can कचिंग, take on many फिर डियोना को forms. करूँगा। In this तो यही क्यों कर रहे हैं, सागा करते हैं। deliver मेरे असेंड हो चुके हैं सारे के, मतलब जाओ कचिंग असेंड हो गया। अभी मेरे को बस वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स का ही करना है। अच्छा 90 हो गया शाव। नहीं 80 का असेंशन हो चुका है मेरा। is its ability अच्छा 80 to 90 असेंशन कर दिया तुमने। हाँ। अरे मत तो सही है। कचिंग मरने वाली है, ऐसी हालत हो गई। हमको हील करना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह मरी है, चोट लगी इसको। Don't blink! without solid ground. Terrestrial तुमने मार भी creatures दिया जब become तक हम heal simply helpless. वेट नहीं कर सकते तो हमारा कचरा। कहानियों है ही हाईएस्ट स्पैम बर्स्ट है उसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसका अटैक सबसे ज्यादा है गेम में अभी। The power of water ऑफ कोर्स होटाओ का ज्यादा होता है बिकॉज़ उसका वो स्किल में 4000 के आसपास बचता है उसका। Incoming! ये मरेगी मेरी कचरा। Let down. बहुत बकवास है। एक तो फिजिकल बिल्ड है मेरी। One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horror. वहाँ तक पहुँचा उसके पहले ही मर गए वो। कोई रे डिफेंस कुछ भी नहीं है इसका, मुझे लग रहा है। Can't handle your dreams! Huh! Speed of light! डियोना का हीलिंग भी बहुत स्लो है, नहीं बचेगी ये। Incoming! डियोना को स्पेशली अगर तुझे शील्ड डियोना चाहिए ना तो अलग से बिल्ड करना पड़ता है। मतलब कि मैंने शील्ड डियोना किया, मैंने हीलिंग डियोना नहीं किया क्योंकि गानियों को हीलिंग नहीं लगती। मैंने तो इसका तो लास्ट स्लो हीलिंग हुई तो भी चलता है मुझे। मैंने लास्ट आर्टिफैक्ट इसका हीलिंग बोनस का रखा है। सॉरी गानियों नहीं, सॉरी होटाओ को स्लो हीलिंग चाहिए ना, इसलिए मुझे चलता है। मैंने स्लो हीलिंग रखा है, शील्ड Is मैक्सिमम its रखा है उसका। ability to take तो तेरे को रेट शील्ड बोला की है ज्यादा 2 पीस, जरूरत 2 पीस रिट्रेसिंग पोलाइट और 2 पीस टेनासिटी ऑफ द मिलिलिट। Look at you! Cut to the chase! है। मैं क्या हवे में मार रहा हूँ, डियोना तूने को मार ही बहुत दिया क्यूट है, तब क्यू क्यू करती है तभी। तक। मैंने बर्स्ट यूज किया, तूने तब तक सबको मार ही दिया। and rivers हाँ water. पहले वाह मर भी गया ओशियन इतना जल्दी। होटाओ का बर्स्ट एक गानियों का बर्स्ट एक बार चला तो फिर क्या, अरे बर्ड्स क्योंकि भी उसका नहीं आए, बर्स्ट मैंने लेवल 8 पे लेके आया हूँ ना मैं। बर्ड्स भी नहीं आए, मतलब हाँ बर्ड्स नहीं है, बड़े वो हर जल्दी टाइम मर गए। कंपलसरी नहीं है बर्ड जाना। यहाँ तो हम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि अभी फर्क ही नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। अरे गानियों का बर्स्ट में तू एक आइसिकल गिरते ना उसके, वो 2000 का डैमेज देते हैं हर एक सिंगल आइसिकल। चल फिर एक और बार करते हैं ओशन एंड, मेरे को काम आएगा इसके लिए, चिंचू के लिए। ओशनॉइड फिर रुक जा, तो फिर दूसरे बॉस को पहले हराते फिर ओशनॉइड तक रिस्पॉन हो जाएगा। तो इसको हराते हैं, क्या कहते हैं, क्रायो को हराते हैं, रजिस्टर। क्रायो रेजिस्वाइन। Every journey has a तू पहुंच भी गया इतनी देर तक टेलीपोर्ट करके। मैंने क्रायो रेजिस्वाइन बोला, उसके बाद मैंने मैप खोला, मतलब तू मैप खोल के बैठा हुआ था। नहीं वो भी टच में ब्रो उतना तो फर्क पड़ता ही है ना, तू कंट्रोलर से osmanthus खेलेगा। line वो tastes भी the है, same as I मैं भी कंट्रोलर remember. से कर रहा तो स्लो होता है। But हाँ। those who share the memory. इसके लिए नो डाउट अपन बेनी एंड जाओ, बेनी तो लेना ही पड़ेगा इसके लिए।
तुम बड़े भैया छोटे भैया ले सकते हो। अरे तुम बड़े भैया छोटे भैया लो ना, बेनी और डिलू। क्या? बेनी और डिलुक लेना। ये डीलो बहुत टाइम लेता है यार। अरे चलेगा, ऐसे टाइम पास बिल्ड। मैं भी ठीक। काजुआ लेने वाला था, मैं जाओ ले लिया। हाँ ठीक है, चल डीलो लेता हूँ। ये होटा तो उसे सीधा स्पैम करेगी वो। मतलब या ऐसे कर, डिलुक और हुटाओ ले ले। अभी मैं निकल गया। चल डिलुक ही लिया तूने, डिलुक और डायना लिया तुझे तूने। तेरे लिए शील्ड लिया मैंने डायोना का। अच्छा, नहीं चाहिए मेरे को। ऊपर भी गया तुमने। ड्रीम वॉक इज ड्रीम वॉक। इसको उठने के पहले मार दो। ये मैं शाओ से सोल कर रहा हूँ। Worthless! 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 I'm going in! Shake it and stir! Boring! Lament! ए मैंने वो यूज कर दिया इसका बर्स्ट, पहले ही मर गया। इसका डीलो का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उसका 2 सेकंड तो सिर्फ उसका एनिमेशन लगता है फर्स्ट को। 2 सेकंड। बड़े भैया छोटे भैया की जोड़ी, बेनी और डिलुक। हाँ, अब भी क्या करना सस्ता डिलुक है बेनी। सस्ता डिलुक। बेनी सस्ता डीलो। किसका फोन आ रहा? Benny's adventure team, assemble! अपने पास रेजिन है Or not. इसको ओशियनेट को हराने के लिए। चलो ओशनवेट हो गया होगा रेडी। चलो इस बार बेनी और बेडो लेते चलो, क्योंकि बेडो भी इलेक्ट्रो बिल्ड हो गई है मेरी। मुझे रोजारिया लेनी है, वो मेरी रोजारिया बिल्ड नहीं हुई है। मेरा मेरा बेनी डूब के मर गया। It always rains. उधर ही खड़ा है, गायब हो गया। Off we go! तू उधर ही एक ही जगह पे स्विम कर रहा था अभी, मतलब टेलीपोर्ट हुआ तू। जो तेरा जॉन्गली से स्विमिंग कर रहा था ना तू। ये मेरा बेनी वापस डूब के मरता मैंने है। उसको डूबते हुए देखा मैंने। अरे मेरा बेनी वापस डूबने वाला था। मैं एक्चुअली ना भाग के आया ना, तो स्टेमिना कम हो जाता है। It all और स्टेमिना का ध्यान कौन देता है आजकल? आजुआ की वजह से स्टेमिना का ध्यान नहीं देता, पता ही नहीं चल और रहा। बेडो की वजह से स्विमिंग का, और शाओ की वजह से क्लाइंबिंग का हो गया तेरा। An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. बोल ब्रो। The power of water किधर है वैसे? is its ability to take any shape. $22K मेरी बेडो ने ऐसे फुकट में मार दिया। कोई नहीं, आप ही देखो। Solid ground. Terrestrial creatures become simply. मैं भूल ही गया कि मेरे पास बेनेट है। बेनेट का बर्स्ट में चालू ये कर ही नहीं रहा। जो ये ले रैंड वरवन से भी। adventure time! मेरा बेनी डूबते डूबते वापस बचा। मेरा स्टैमिना एकदम कम था और प्लेटफॉर्म सिंक Is हो गया। its ability to take any shape. हाँ ये तो है। मर गई। Everybody stand back!
one who is ignorant of water's treasures fails also to भाई comprehend अपना लक its अच्छा अभी तक बढ़ गया horrors. है। ये मरेगी बेडो वापस इसका मरने का मूड डक्स बड़ा डैमेज कर रहे हैं क्योंकि वो आजू बाजू उनका ये होता है ना। Let's see what happens when you lose your foothold. अपने पास वही ऑप्शन है पानी में जाके डूब मरो ताकि अपने को वो बर्च से डैमेज ना हो। तुम तो The भगवान के power भरोसे है is its ability to take हमारे पास भगवान नहीं है। मोटा वर्ड आ गया। अरे ये भी बड़ा दिमाग था मार ही दिया तूने ये तू मेरे को मरवाएगा बोल तो दे कि तुम खत्म कर रहे हो उसको Blaze over. Everybody stand back. वो फ्रीज हो रहा है तेरे को। as long as you मैं मार आखिरी अटैक मारने के लिए आया मेरी बेड़ों का बर्स्ट अब जाके फुल हुआ पता है मैं यूज ही नहीं किया अभी तक बर्स्ट इसका बहुत उसका बर्स्ट वही तो प्रॉब्लम है उसका बर्स्ट का रेट बहुत ज्यादा है। मैं अभी डीपीएस बिल्ड कर रहा हूँ ना तो एनर्जी रिचार्ज रखा ही नहीं है मैंने हाँ पर उसका बर्स्ट वही तो प्रॉब्लम है इसलिए वो नया स्वॉर्ड जो है और नया एम्ब्लेम का आर्टिफैक्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। चलो अभी तो हमारा रेजिन भी खत्म हो गया मेरे पास कंडेंस 3 ही बॉस फाइट कर सकते हो तुम तो। मेरे नहीं पास 4 कर सकते हैं ना तो 120 था। हाँ मेरे पास 130 था मेरे पास कंडेंस रेजिन भी नहीं है ओके तू मेरे से हिस्ट्री पूछ रहा था ना कि मैंने कितना विशेष किया है कैरेक्टर विशेष पे तो देख कैरेक्टर विशेष पे It's hard लास्ट to मेरे को remain on जीनियन dry मिली land for so long. उसके बाद मेरा भरोसा उठ गया Quite मैंने seem to छोड़ ही get my दिया land विश legs करने back. फिर मेरे को बीच में बेल भी आया रिस्क लेके किया। मेरे को निंगवान मैंने ये बेल फ्लूट ये वो रोजारिया If you ever want to काजुआ try tactics, नहीं मतलब वो बारवा अरे वो पाइमोन वो जो वेबसाइट है ना उसमें चेक कर कि तेरा पीटी के लिए कितना बचा है। मैं अभी 72 विश पे हूँ 72 पे मतलब तेरा 28 विशेस बाकी है। 72 पे नहीं 18 विशेस। हाँ 18 विश 18 में तेरे को गारंटी है मेरे को 30 पे गारंटी है। तो मैं वेट करेगा मैं बाल के लिए योइमिया नहीं चाहिए रिस्क नहीं लेने का क्योंकि मैं सॉफ्ट पिटी के भी बड़े पास में हूँ 71 72 पे हो ना हाँ 74 पे होता है सॉफ्ट पीटी। तो नहीं भाई रिस्क नहीं 74 से 80 के बीच में होता है सॉफ्ट पीटी का मुझे ये मुझे होटा 72 पे मिली थी 74 पे मिली थी क्या हाँ जोंगले 77 पे। तेरी गानियों सो गई थी वो सो ही जाती है वो उसको खड़ा रखा सो जाती है वो। बोल क्या करना है अभी कुछ नहीं बचा ही नहीं करने को अभी क्या करेंगे। मैं एक मिनट में सेरेनिटी पॉट में जाके वो फ्रेजाइल रेजिन ले सकता हूँ हाँ तो ले ले तो उससे एक और बॉस के साथ लड़ सकते हैं हाँ बट ऐसे ही लड़ लेते हैं कोई ज़रूरी नहीं है वर्ल्ड जॉइन रिक्वेस्ट चानवू करके कोई बंदा है वो पूछने के लिए आ रहा है मतलब मुझे बहुत आता है इग्नोर ही करता हूँ। मैंने बंद करके रखा है वापस से क्यों चालू हो जाता है ये नहीं विद रिक्वेस्ट चालू रखना पड़ता है ना अगर अपना दोनों को भी करना है तो रिजेक्ट जॉइन विद रिक्वेस्ट चालू रखने का विद परमिशन वरना
ऑफ कर देगा तो मतलब कोऑप पूरा ही ऑफ हो जाएगा। फिर तू भी नहीं घुस पाएगा ना। अरे भाई तू क्या कर रहा है, मुझे क्यों डैमेज कर रहा है? तू नोटिस किया? इलेक्ट्रो चार्ज में मैं डैमेज हो रहा हूँ। चल जाना सेरेनिटी पॉट है ना, वो फ्रेजाइल रेजिन। ये अपन ये साथ में कर सकते हैं जो वो क्या? थिएटर मैकेनिकस। मैंने घंटा लगा रहा है, मैंने लेवल 6 पे डाला से। मैं लेवल 9 पे पहुंचा, लेवल 9 हो ही नहीं रहा मेरे से। हाँ, मेरा हो गया सब कुछ क्लेम, तो अभी मुझे घंटा ला रहा है उसमें और उसके रिवॉर्ड्स भी कुछ काम के नहीं है। हाँ This मुझे जो round. रिवॉर्ड चाहिए थे वो ले लिए मैंने। वो वही मैंने भी बाकी ले के लिया, जाने मेरा दिए। खत्म हो गया। प्रीमो जेम्स ले लिए, और जो बुक है बाल की बुक्स है वो ले ली। बाकी तो सब रहने दिए। मैंने बुक्स भी नहीं कैश ली। शायद एक दो स्टेज लेके मैं मोरा ले लूं, क्योंकि मुझे वो चाहिए। मैंने सिर्फ मोरा ले लिया और वो प्रीमो जेम्स ले लिया। चल देखता हूँ एक दो स्टेजेस और करके हीरोज वेट और मोरा निपटा। If you ever ठीक है, चल मैंने वो फ्रेजाइल रेजिन ले लिया है। आ जा मेरे वर्ल्ड में अब। अच्छा, फ्रेंड इज ऑलरेडी इन ए कोऑप गेम। तू निकल, तू कोऑप में। क्या करने का है अपने को? डोमेन करना है कोई? तेरे ऊपर है, तुझे जो करना है, तेरे पास रेजिन है। मैं तो ऐसे ही टैग अलोंग कर रहा हूँ। ओके, वेरेडस एंड वेनियर तेरे को चाहिए काजुआ के लिए या हुटाओ के लिए? मेरे पास रेजिन ही नहीं है। अच्छा हाँ, I follow the wind. ठीक है, तेरे वर्ल्ड में घुसता हो सकता है। वेरिडेशन तो ऐसे ही स्पैम करता रहता था। फ्रेंड इज ऑलरेडी इन कोऑप गेम, कैन नॉट अप्लाई। ऐसा हो रहा है। मेरे को शायद दिया तो सिंगल प्लेयर में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं मुझे ही जाना पड़ेगा ना सिंगल प्लेयर पे। मैं हो गया सिंगल प्लेयर पे। मेरा सिंगल अभी हो प्लेयर रहा नहीं है, है। अभी हो रहा है। हाँ बाबा, मेरे को सिंगल प्लेयर में जाना पड़ा। तो वो तो करना ही था ना, मैं तेरे को बोला तू निकल जा। अरे ये ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, ये क्या सिंगल प्लेयर It can मल्टीप्लेयर aid us greatly in the मोड? purging of evil. सीधा सेरेनिटी पॉट से निकालो ना। वो है कौन से डोमेन करना है? चल वो नया वाला शीमे वाला जो है वो, या एक मिनट देखने दे टैलेंट वाले कौन से डोमेन चालू है। ये बार्ड वाला है, आज वेडनेसडे वाला है। गोल्ड है ना? तुझे मंडे वाले लगते हैं। गोल्ड Would है। you like to see Liyue's tourist spots? आज गोल्ड I है। have a few references. गोल्ड मतलब शिंचो, जोंगली और बेडो। चाइल्ड वाला डोमेन भी कर सकते हैं, काफी टाइम हो गया मैंने चाइल्ड के लिए Osmanthus फार्मिंग नहीं wine किया। tastes the चाइल्ड वाला डोमेन मंडे को खुलता है। नहीं अभी Where ड्रैगन those स्पाइन who share the memory. जो है। अच्छा आइस वाला। हाँ, वरना छोड़, ये जो शीमे जामा अपना जो एनर्जी रिचार्ज वाला है ना, वो वाला करते हैं। हाँ एम्ब्लेम मजा करते। मैं अभी बेडो के ऊपर डाला ना, मेरे को क्रिट डैमेज के बदले क्रिट रेट वाला चाहिए। चल स्टार्ट कर। काजुआ एंड बेनी कैन नॉट स्विच कैरेक्टर वाइल क्लाइंबिंग। अरे माँ कसम, मेरे को बाहर निकलना पड़ा है। बट अभी दे भेज, अभी भेज रिक्वेस्ट आ रहा है। Ready? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. पहली बार मैं तेरे साथ लोड हुआ। कर दे स्टार्ट। Adventure time. एडवेंचर। We go.
nature. As one with wind and cloud. Teamwork is dreamwork! Wind strike. This is long overdue! Adorn my night into the wind. Everybody stand back! आसान, बहुत आसान, Time to go. हद से ज़्यादा आसान। चल रिस्टार्ट कर, एक और बार कर सकता हूँ। मैं कैसे रिस्टार्ट करूँगा? मेरे पास रेजिन नहीं है ना। रिस्टार्ट हो जाता है डोमेन। अच्छा हाँ, नहीं, मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा। यू कैन वेट फॉर डिलाइन टू इनवाइट यू टू कंटिन्यू द चैलेंज। अब डिलाइन चालू ही नहीं कर सकता तो क्या करें अब? यार इनको पता है क्या करना चाहिए? स्पाइरल अभी कोऑप मोड में डालना चाहिए तो मजा है। सिंगल प्लेयर चीज है वो। नहीं बट वो मल्टीप्लेयर भी देना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा के। अभी देखना 12 की कितनी ज्यादा डिफिकल्टी है। फ्लोर 12 भाई तगड़ा डिफिकल्ट है। वो भी है। फ्लोर 11 तक एकदम सिंपल हो जाता, सिंपल है 12 बहुत डिफिकल्ट मतलब टफ है अपन इजी हो जाता है काफी। और पहले स्वॉल का भी अपने को वो था, बफ था, तो अपन कर ले नहीं काजुआ के साथ। बॉल का बफ तभी मेरे पास काजुआ नहीं था ना। मेरे पास सुक्रोस थी ना। हाँ मेरे पास दोनों, मतलब सुक्रोज मैंने बिल्ट ही नहीं की थी। मैंने करी हुई थी क्योंकि मेरी C3 हो चुकी थी। The wind knows it. मेरे दोनों के बर्स्ट और स्किल कूल डाउन पे थे। Teamwork is dreamwork! बात नहीं जिंदा है। Off we go! बेनी टेक्स द केक। ये डोमेन का एक अच्छा चीज है कि तेरे को एक तो कम से कम मिलेगा, एक अटैक परसेंटेज है, दूसरा एनर्जी रिचार्ज है, दोनों काम वाले हैं। दोनों में से कोई भी मिले। वेरा डिसेंट वेनियर के अंदर तेरे को हीलिंग वाला मिल जाएगा, तो इतने हीलर बनाने भी नहीं वाला जितने आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। हाँ ना। तू निकला? हाँ निकला। Into the wind. बस बस और नहीं लड़ने का, हो गया। Forth my blade. हो गया? हाँ रेजिन खत्म, विन फिनिश। टाटा बाय बाय। एजडा को एक बार ऐसे टाइम पास में हराने का तो चल। Into the wind. बस ये वो फ्रॉग Time to go. This will do. From whence you came, swift तो and बाहर ऐसे टाइम पास में लग रहा है। one with nature. Clouds high. The birds call. Into the wind. मेरा तो एक्चुअली है ना, ये काजुआ इतना पावरफुल हो गया ना, लाइक मेरे को जाओ से ज्यादा पावरफुल काजुआ लगता है। उसका स्वॉर्ड बहुत ज्यादा ओपी है। बहुत ज्यादा। चल लेट्स गो। अभी भी इसका क्राउन करना बाकी है। C2 भी है ना तेरा? C2 भी है ना? वो भी फर्क C2 भी पड़ता है, है। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ C2 का बहुत ज्यादा फर्क। Everybody stand back! This is time, Morax. मेरा C0 है, मैं सब DPS की तरह यूज कर सकता हूँ उसको। मेरा साला ई किल 5000 10,000 ऐसे नॉर्मली करता है। और मेरा बेनी का भी कभी कभी है ना 22K कर देता है स्किल। Adventure time! अच्छा 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 अच्छा।
अरे तेरा इसका भी है ना तेरे पास क्या बोलते हैं ये भी है ना क्या है वो Clouds high. The birds come. क्या The wind knows it. लायंस रोड भी है ना तेरे पास हाँ लायंस रोड भी है बट आई थिंक लायंस रोड इतना इफेक्टिव नहीं है उससे बेटर उसको क्रिट डैमेज 20% तो देता है Time to go. बट वो सिर्फ पायरो वाले अफेक्टेड के ऊपर करता है पायरो डैमेज पे नहीं करता है तो पहले पायरो का स्टेटस रहेगा तो फर्क करता है Everybody stand back! इससे बेटर है ना इस प्रोटोटाइप रैंक और ज़्यादा डीपीएस बढ़ाता है बेनी के लिए One with wind and cloud. फौज भी है सेकंड ये प्लेस वाटर का आ गया मेरे को मार्क आ गया आई हैव द मार्क ऑफ वाटर Off we go! देखिए जो बोल रही है On your tomb. चली जा रही है लाइट रिवर उठाओगी हाँ Experience an eon of suffering. Adventure time! Let's light it up! Teamwork is streamwork! That's gonna hurt! Time to go! that really hurt Let's light it up! I'm going in! Solidify. This is order. Clouds high. The birds. खत्म Wind strike. इसके बिना मोरेक्स वाले डायलॉग भी सही है चल वो ऐसा अभी बोलता है यू हैव कम टू फेस योर रेकनिंग ऐसा करके बोलता है स्टार्टिंग क्या करना है अभी बोल चाइल्ड ही बचा है फिर और आ रहा थक गया हूँ मैं अभी मेरा टीम कोई चेंज करता हूँ तो चाइल्ड के पास जाता हूँ उसको हराता हूँ उसके साथ कैसे सिनर्जी जमती है सब कैरेक्टर की समझ आता है फिर बाहर आ जाता हूँ चाइल्ड ऐसा वो गेम है वो लोग बच्चों को हराता ना ऐसा ऐसा वाला सिचुएशन हाँ पहले बच्चों के ऊपर ट्राई करो फिर बड़ों पे ट्राई करो भाई इसलिए चाइल्ड बोर होता है अब मुझे सेनियोरा का वेट करते हैं सिनियोरा का फाइट अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है सेनियोरा स्टेशनरी रहती है ना कैटलिस्ट है ना चाइल्ड कैसे इधर उधर घूमता है तो वो डोमेन पे घूमना पड़ता है तुम्हें नहीं ये भी घूम तो रही थी काफी नहीं सेनियोरा एक ही जगह पे खड़ी रहती है सेनियोरा पूरे स्टेज में जहाँ से वो एंटर होती है और जहाँ रुकती है ना वो स्टेज Time to में go. वहाँ से हिलती भी नहीं है वो जब ट्रांसफॉर्म भी होती है ना उसके पायरो विजन में तभी भी हिलती नहीं ठीक है देखते हैं, आएगी तो पता लगेगा जो उसका फुटेज है ना टेस्ट फुटेज तो उसका ये है कि उसका एनवायरनमेंट ड्रैगन स्पाइन जैसा है तो जब वो क्रायो डिल्यूजन में रहती है तभी शेयर कोल्ड One with nature. पायरो विजन में रहती है तो शेयर हीट क्या है वो ओवरहीटिंग का कब से स्टेटस इफेक्ट आया हाँ ऐड किया सेनियोरा के साथ ओवर ही है ये कब से स्टार्ट हाँ मतलब अभी उसके साथ स्टार्ट हो रहा है मेरे को लगा हाइपोस्टेसिस की तरफ से की वजह से लगाया रहेगा जब वो पायरो विजन में जाएगी ना पहले क्रायो फेज में रहती है तभी तुझे शेयर कोल्ड होता है कंटिन्यूसली और जब भी वो पायरो में जाती है तभी ओवर हीट होता है दोनों स्टेटस अभी अप्लाई होगा Just when will work तो भाई बेनी हीलर लगेगा ही लगेगा अपने को पहले फेज के लिए हाँ और उसमें ये नहीं है वो डोमेन में तेरे पास वार्मिंग सिली या कूलिंग सिली कोई नहीं है तेरे को कंटिन्यूअस हीलिंग वाला बेनी चाहिए ही चाहिए फायर हाँ एटलीस्ट फर्स्ट फेज के लिए दोनों फेज के लिए ओवर हीट में भी तेरी लाइफ जाएगी उसके लिए फिर डियो ना
शील्ड Time to go. बहुत है, जैसे जब आएगी तब देखेंगे ना, क्योंकि जो फुटेज मैंने देखी ना, हाँ उसमें वो बंदे ने पहले फेज में, क्रायो फेज में ऊटा यूज करके हराया उसको, और पायरो फेज में आयाका को लेके आया। वो यान करके राइटर खड़ी है इधर चाइल्ड के पास। चल बोल क्या करना है अभी। मैंने बंद कर दी है। गेम बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं स्पाइरल अबिस कर सकता हूँ या स्टोरी क्वेस्ट। मैं तो सोच रहा था स्टोरी क्वेस्ट करूँगा आज। स्पाइरल कर मजा आएगा। चल करता हूँ। लीव द टीम। Co-op mode interrupted. Returning to your own world. स्पाइरल अच्छा है ये टाइम का, टफ है, मतलब मजा आता है। मेरा अभी कोई भी टीम ढंग से बिल्ड नहीं है ना। आर्टिफैक्ट्स भी स्विच कर दी है, और आर्टिफैक्ट्स वापस से स्विच बैक करूँगा अच्छे वालों पे तो भूल जाऊँगा प्रॉपर्ली बिल्ड करने पे। पहले रहने दी। नहीं, मेरी दोनों टीम में मतलब अभी कैसा है, डीलूक है। डीलूक फास्ट नहीं है, प्रॉब्लम वही है उसका, स्लो बहुत है वो। ये पहले वाले में तो काजुआ बेनी लेना ही पड़ेगा। अरे स्टार्ट काजुआ बेनी, सेकेंड टीम लालू बेडो कोचिंग, इधर चोंग्यून डियोना, चीची के बदले और कौन है, चाइल्ड, अच्छा मेरे वाटर वाला के बदले मेरे को उल्टा फ्रीज वाला लेना चाहिए था। कल छोड़ दिया सब। यार मैंने काजुआ बेनी लिया। As one with wind and cloud. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! A touch of frost. Spirit blade. Let's light it up! ये हील भी हो रहे हैं क्या पहले वाले के अंदर? Adventure time! Let's light it up! I'm going in! पहले वाले में शायद ये हील हो रहे हैं। Adventure time! इनके नीचे हरा वाला रिंग है। अरे नहीं, वो उनका Submit for judgment. बॉक्स होता है, Touch of तो frost. उसके सबऑर्डिनेट को पहले उड़ाना पड़ता है। नहीं मैं तो सबसे पहले बड़े वाले को हराया। Light it सबसे up! पहले बड़े वाले को हराया। हाँ, मैं भी वही करता हूँ। मैं वो जो बीच में बड़ा वाला है उसको पहले उड़ा देता हूँ। हाँ, आज बात करो। Forth my blade. One with nature. Clouds high. The birds काजुआ तो क्राउड कर देगा। टेंशन नहीं है, 2-3 लोग लग रहे हैं। from whence you came. A touch of frost. Let's light it up! Everybody stand back! The wind knows me. एक और बचा है। As one with wind and cloud. Into the wind. पहला फेज खत्म, सेकंड फेज पे आ गया। ऑन द अदर साइड लेट्स सी। बड़े वाले पहले बड़े वाले को हराना कि छोटे वाले को? Power that ended life! No, my sword! Let me go first. Speed of light! जैसे मतलब जैसे तुझे इच्छा होती है, क्योंकि लेवल 9 पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Sword comes लेवल 10 पे। Don't blink! 10 पे है तो Back off!
करते हैं, छोटे वाले बड़े को यूज करते हैं। मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि छोटा का बर्स्ट सबको उड़ा ही देता है एक शॉट में। कोई नोटिस नहीं किया वो लोग किल होते हुए। ठीक है ना, अभी तो अकेला सिंगल टारगेट डैमेज सबसे हाईएस्ट है ना गेम में। अभी अकेला ही है ना, वैसे भी क्या करें। Eyes on me! Rain cutter! मेरी कचिंग ठीक है, नॉर्मल अटैक कर रही है। सही है। ये मैंने फिजिकल कचिंग बनाया। तो फिजिकल कचिंग अच्छा है। नहीं 1 के है वो, इसका क्या कहते हैं, Nowhere to hide. इलेक्ट्रो चार्ज के जो उसका डिफेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस रेडी कर रहा था। Witness the power of Gugwa! बट स्टिल काफी अच्छा गया। 9 स्टार्स आ गए पहले वाले में। ये लेवल 10 फिर भी इजी है रे। लेवल 11 और 12 लेवल पे 9 10 बहुत इजी है। 11 भी इजी है मैं बोलूं। मेरा टीम काउंट के हिसाब से 11 भी बहुत इजी था मेरे लिए। 12 ये एचपी पूल बहुत ज्यादा है ब्रो। Back into action. मैं तो बोल रहा ना, मोटाओ का बर्स्ट 1,18,000 हो रहा था। Spirit Blade! Attack! तो फिर भी उनका लाइफ 20% कम हुआ। Clouds high. The birds come! मैं इनका एचपी बहुत ज्यादा है। A touch of frost. Submit for judgment. खत्म। इतनी देर में, मतलब 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। पहला वाला 30 सेकंड्स में किया। Our eavesdropper. Wheel of life. Cut to the chase. Blink. Don't blink. अब एक दूसरे से अब पूरी भाग रही है। Like that. Wow. मेरी चीची मरने लगी इतनी जल्दी। मर गई, चीची मर गई। Field back up. हीलर ही नहीं, मर जाऊंगा ये नहीं होगा। तो मतलब ट्राई करते। वही 1 सेकंड का नेग्लिजेंस है ना, हाँ पूरा गेम खराब कर देता है। Time to go. रिट्राई करते हैं क्योंकि वापस कर तो दिया। करेगा और कर दिया। वापस को पहले स्टेट से करना पड़ेगा। Can't handle your drink. Forth, my blade. Teamwork is dreamwork! Fine. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night into the wind. Spirit Blade. Attack! One with my ने भी पिछली बार खत्म किया, इस बार भी चोंगयून ने फिनिश किया। पार्ट 1 बहुत इजी है, पार्ट 2 में प्रॉब्लम है There you are. Nowhere to hide. क्योंकि इलेक्ट्रो के खिलाफ इलेक्ट्रो लड़ रहे हैं ना। Blink. Rise. Rain outlines your face. Back off. चल कोई नहीं तो कंप्लीट कर। मतलब बात तो कर ही सकते हैं ना, वैसे भी ऐसे सेंसलेस होती तो खेलना। Power the thunder. इतना ज़्यादा सोचना थोड़ी पड़ता है ये स्टार्टिंग वाले के लिए। Let me weave you a verse. ये एक दूसरे को हील कर रहे हैं, बट हेल्थ चुरा के कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं वो नहीं पता। Be a monument to chivalry. कचिंग मर गई। ये टीम अच्छा ही नहीं है भाई। Cut to the chase. कचिंग नहीं, Got lucky that Genshin. right. कचिंग भी मर गई। From time. ये टीम ये पार्ट के लिए ठीक नहीं है, Opening box of a death eye dress. ऐसे करना एक पड़ेगा। काम कर तू So very bored. तेरी वीक टीम फर्स्ट स्टेज पे रखा कर। Just a scratch. Wow.
इलेक्ट्रो वाला ना बस Faster. चल चीची नहीं मरना मर मत मरना ही नहीं मरना मत मरना मत I didn't. Oh. To ashes! Back off! चीची जब तक जिंदा है तब तक चांस है जैसे ही चीची गई दो मर गए डेढ़ हो भी गई मेरी Over here. Wow. Faster. Okay, Like. आई थिंक इधर बेनी काजुआ ही लगेंगे Go. Blink. You need to hurry up. Like. मजा ही नहीं आ रहा चीची जिंदा तो रह रही है पर इतना डैमेज नहीं कर रही है टूके तो करती है बट दैट्स नॉट इनफ टू प्रॉपर्ली Oh, now you've got me worked up. Rise. Oh, faster. Okay, faster. शी इज हीलिंग मोर देन दे कुड डैमेज है तो हेल्थ तो फुल टाइम फुल है मैं बता रहा के रहूँगा हरा के तो जाऊँगा बदला लूँगा मैं डेड और कैचिंग का Let me amuse myself. चार से Blink. Faster. Okay, faster. Look at me. चल लास्ट एनिमी बचा Orders given. Orders received. इसका इतना टाइम बचा This is well done. ओहो चांस है 3 स्टार का क्या बात है 10 सेकंड बचे हैं ए 3 स्टार मिला चीची के साथ अरे वाह कर दिया चीची ने बट लास्ट फेज नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से चलो काजुआ के साथ एक बार पहला फेज तो कंप्लीट करके ट्राई करते हैं अभी कर Let's light it up! इलेक्ट्रो वाला A touch of frost! वो बोर करते हैं क्योंकि वो मैं You came! उनका एचपी एकदम एंड तक मैं उठा के लेके आता हूँ फिर उनकी शील्ड चालू होती है अरे और वो बर्स्ट का एनर्जी भी निकाल देता ना वो पूरा दिमाग खराब कर देता है इतना मेहनत करके फील करो और फिर बाद में तुम भाई तुमको लेना ही है सब Holy proclamation. बस अरे पर बहुत जल्दी अपन ने कर उसका हेल्थ बहुत कम कर दिया मैंने The power of revelation. हाँ फिर उसकी शील्ड एक बार बैठती है फिर बहुत टाइम लगता है One with my blade! उसका मेन शील्ड का यूज होना देना Spirit blade! A touch! The word of joy. बेनी और काजुआ का मेन डीपीएस उसके इनके बर्स्ट के इससे ही है तो वो छीन लेता है ना पूरा तो वो पूरा चढ़ा देता है Everybody stand back. खत्म हरा दिया कितना 1 मिनट 4 सेकंड में और अभी इनको कैसे हराएंगे वो नहीं पता अभी और दो ये 3 है ना इधर 1 मिनट। आई थिंक चीची के साथ हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रो वाले हैं और वो वाटर वाले तो ट्राई करता हूँ 3 स्टार्स तो मिलने के चांसेस कम है अभी बस ये पानी वाला ही है आई थिंक चीची कैन डू इट 2 स्टार तो ला 1 स्टार तो ला ही सकती है देखते
DPS चीची गो Go. अच्छा रिस्टार्ट नहीं किया, देखते। अरे इसका जब पानी वाले फेज में आएगा तब जाके दिमाग करेगा, जब इसका शील्ड आएगा। अभी तो हेल्थ इसका, जो शील्ड आता है उसका। अभी हेल्थ 60% हो गया। देख रहा है क्या तू? स्क्रीन पे देख रहा है? नहीं, देखना। इसी बहाने कोई एक व्यूअर तो आएगा मेरा। अरे मैं व्हाट्सएप किधर भी डालता नहीं मेरे। Okay, faster. Life goes on. एक चीज फायदा है, हेल्थ फुल रहता है। और क्या बात, अच्छा लड़ रही है चीजी पे। My friends, Wheel of life. फ्रीज कर दिया। बोरिंग है फाइट। Faster. भाई सेक्रीफिशियल स्वॉर्ड होती ना चीची पे तो ज्यादा फायदा मिलता है। मैंने अभी योइमिया पे इसीलिए मैंने किया था विश, मुझे सैक्सो उसमें से एक इसमें सैक्सवर्ड आ Goes जाए, on. मतलब एक भी सैक्सवर्ड नहीं हुआ, रेन स्लैशर आया फालतू का। यूज भी नहीं होता वो। बोला सैक्सवर्ड क्यों नहीं हो रहा है, तो बाद में वाला वेपन बैनर पे मुझे नहीं करना सैक्सवर्ड की। अगर आ गए ना चिंचू को दे दिया ना भाई, मजे थे। चिंचू या चीची को। चिंचू के लिए ही चाहिए। चल शील्ड 50% तो हो गई। Wheel of life. 2 स्टार मुश्किल है, 1 स्टार आ सकता है। Sacred name. Fortune preserver. हेल्थ फुल है चीची का, मतलब इतना मजाक लग रहा है ना। वो मार खा के अपना हेल्थ कम कराया जा रहा है, चीची पुल करके बैठी है। Goes on. I didn't feel that. गो चीची गो। Wow. एक चीची के लिए फ्लूट काफी अच्छा वेपन है। मैं पहले प्रोटोटाइप रैंक और देखे रखा था क्योंकि फिजिकल Faster. चीची बना के रखा था मैंने। तो मैं Wheel of फ्लूट का ये बहुत है, उसका पैसिव प्रॉक करने को पैसिव टाइम पैसिव से उसका डैमेज बहुत बढ़ता है। हाँ पर प्रॉक करने को टाइम नहीं बिल्डअप है उसका। तो ठीक है, चीची से बहुत जल्दी हो भी जाता है। हो गया वो अपना 5 मिनट 30 1 स्टार आया चीची से। चीची ने अकेले ले फेल दिया। ओहो, पायरो एंड क्रायो इज इंक्रीज्ड। तो मेरे को 2 अलग टीम करना पड़ेगा, मतलब पायरो के लिए हाइड्रो डोमिनेंट और हाइड्रो और क्रायो के लिए पायरो डोमिनेंट। मेरा वही था, मेरा टीम क्या था, पायरो पे चोंगयन फिर दूसरी टीम में डालना बारबरा, पड़ेगा मेरे को। चोंगयुन, बारबरा, जोंगली और गानियो पायरो के लिए, और इसके लिए अपना क्रायो वाले के लिए हुटाओ, डीलू, काजुआ और अलग अलग। अरे चाइल्ड लेना ही पड़ेगा मेरे को दूसरे फेज के लिए, लास्ट फेज के लिए।
पायरो के लिए चाइल्ड लगेगा ही तुझे। ये फालतू चाइल्ड और बारबरा ले, मैं तो ऐसा बोलूं। चाइल्ड और चिंचू ले सकता ना। शिंचो हाइड्रो एप्लीकेशन बहुत कम करता है। बारबरा का कैसा हर अटैक का हाइड्रो एप्लीकेशन है। और कौन ले सकता क्योंकि वो उतना फास्ट, पायरो वाला फास्ट बहुत है ना। चाइल्ड के साथ I need someone. I can take Bedo. Then over here. बेड़ो मत ले, बेड़ो मत ले। चाइल्ड के साथ चीची ले, चाइल्ड चीची। बेडो ले लिया बेडो। ठीक है। वाटर ओवरलोड रिएक्शन मारेगा फालतू का, उड़ेगा तू। क्यों उड़ूंगा काय को? क्योंकि वो उसका प्रायोरिटी ज्यादा है ना हाइपोस्टेसिस का। वो भी है। पहले टीम के लिए क्या लूं मैं, वो सोच रहा हूँ। एक देख ले, क्रायो वाला कौन है तेरे पास? पायरो वाला कौन है तेरे पास? हो गया। मैं शंगलिंग है ना मेरे पास, वो डाल रहा हूँ। चलो वाटर के लिए मैं सिर्फ चाइल्ड ही ले रहा हूँ। कैरेक्टर बर्स्ट डैमेज 20%। अच्छा है कि मैंने We go. के लिए Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. Eat this. Fallen leaves, adorn my चालू night. वाली है, साउथ में। Into the wind. Let's light it up. Yeah, ow. Everybody stand back. Stand up. Sketch. Look at you. जयमो बच्चों, As one with wind and cloud. जयमो The wind knows me. तो खा दो। तू खा दो। Teamwork is dreamwork. Into the wind. Clouds high. The birds call. It's fine. One with nature. भाई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इतना मैं डीपीएस कर रहा हूँ ना, और इतना बर्स्ट वगैरह मार रहा हूँ ना। Sketch. Can't handle your drink. One with wind and cloud. The wind knows me. पता भी नहीं चला कि क्या किया। इतना फ्लैशेस वैसे हो रहा था ना। फर्स्ट हाफ बहुत इजी ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दी बोल दिया। No time to lose. Amateur mistake. Submit for judgment. Swift and merciful. Eyes on me. Back off. Life goes on. You can run, but you can't hide. Forth my blade. Spirit blade. You're mine. Shouldn't let your guard down. Rise. Back off! One with my blade. But how? Submit for judgment. चल तू खेल, क्योंकि मैं रखता हूँ। मेरा भी अभी थोड़ा काम है, ठीक है? चलो हो गया। पहला वाला पार्ट 3 स्टार हो गया। सही है, गुड। गुड। चल चलो बाय बाय। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय, ठीक है। गुड नाइट। चल बाय बाय विनीत। बाय। चलो अभी विनीत जा चुके हैं तो अभी हम अकेले खेलेंगे, देखते हैं।
Character elemental skill damage plus 20. Nice and spicy. Adventure time! Teamwork is dreamwork! Into the wind! Out of the frying pan. Wind strike. Clouds high. The birds call. Think you can bully me? I'm going in! Nice and spicy. You're toast. Let's light it up! Fallen leaves. Adorn my Adorn my night. night. One with nature. Think you can bully me? Diana, out of the frying pan. Let's light it up! Let's light it up! And ये I think बहुत जल्दी जाएगा. As one with wind and एक cloud. गया. गया. Very easy. Behold, the abyss has come. Life goes on. To ashes! Swift and merciful. Spirit blade. Attack. You're mine. The gift of grace. Hear the truth. One with my blade. Fourth, my blade. Submit for judgment. But how? The light shine. Go. Hear the truth. Faster? Okay, faster. The One gift with my blade. of grace. मार दे child इसको. A holy A touch of frost. proclamation. Orders given. The power. Orders received. Orders given. Orders received. Spirit blade. Attack. Shall set you free. Hear ye the words of joy. Swift and merciful. Tidal wave. Brace yourself. This is gonna hurt. Hear ye the words of joy. Amateur mistake. The Fourth, my truth blade. shall set you free. The power Adam. 3 stars. Sexy. Shaken and stirred. Eat this. Let's light it up! Teamwork is... Wind strike. Boba, get them. Nice and spicy. Let's light it up! Adventure time!
strike. Fallen leaves. Adorn. खत्म। अभी बस ये वाले का बात है। Wheel of life. One with my blade. Rise. Back off! Submit for judgment. A touch of Go. Back off! Swift and merciful. Bring it on. You're pretty good. Life goes on. Fight. आता अभी Back off! Eyes on me! A touch of frost. Go. Faster? Okay, faster. Swift and merciful, from whence you came. Back off! Riptide. Rise. One with my blade. Spirit blade. Attack! चल
खत्म 1 स्टार ठीक है not bad better than nothing कम से कम क्लियर तो हो गया Downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. चलो 1 मिनट पहले रिवॉर्ड्स क्लेम कर लेते हैं मिरर मेडन है और ये है कायरागी मागू कैंकी रून हंटर रून गार्ड देख के करना पड़ेगा चलो स्पाइरल अभी सभी इतना ही करते हैं ये क्या है नहीं ये करेंगे हम एक नया इवेंट स्टार्ट हुआ है थिएटर मैकेनिकस तो कर चुका हूँ मैं अरे इसको तो अभी हराया बेलोइंग ब्लेज ट्रायल सबका कर चुके हैं थिएटर मैकेनिकस नहीं करने का है और ये भी ये करेंगे Compared to... Into the wind! The wind knows me. Time to go. A touch of frost. टॉक टू शोशन शोशन से बात करेंगे हेलो my name is Shoshan. I'm the master of Shinryu. From your appearance, you must be the traveler from afar. What do you say? Are you interested in learning this art? Sure, you. This is an original skill that I invented. It's different from Iwakura and Kitan arts, or even the Favonius blade works from overseas, which all require weapons for combat. In the sense that the essence of my technique is exercising one's heart to hone one's combat skills. In my early years, I traveled abroad to study martial arts. There, I observed Natlans boxing arts. When they practiced, they would fight with an imaginary opponent. Imaginary opponent? So, you want to fight with your imaginary friend? Precisely. You imagine your opponent's actions and react based on your imagination. This practice, which the locals there called shadowboxing, appeared to be a rather lofty skill to me. As such, Shiryu is an unrestricted school of fighting that makes use of this practice method. Under my guidance, you can recreate all manner of imaginary opponents, from slimes to Uchimusha, and even those outlander warriors from SNES 9. So long as you are well versed in the art of Shinryu, you can easily recreate a battle with them to hone your combat skills. By the way, I'm afraid that the mightiest creature in the world is the Electro Crystal Fly, Nakatane. The previous Iwakura successor once tried to challenge a human-shaped Electro Crystal Fly using Shinryu. He barely lasted 10 seconds. This art is not limited to opponents alone. I can even simulate the wind direction, weather mechanisms, and even ley line disorder using Shinryu. It's a truly practical skill.
Paimon's gotta ask. If Shinryu is already so strong, why do you still need to ask people to join yourself, Mr. Shoshin? My Shinryu is a little too real to the point where my disciples can become injured when fighting their imaginary foes. Even an imaginary blade created by Shinryu can slice your hands and feet. A musket so imagined can also shoot through your body. As time goes by, people who are not devoted to the martial arts will leave Shinryu out of fear. As for some others, I judged that they were maniac martial desperados unsuited to mastering this art. So I kicked them out. Wow, that good, eh? Indeed. However, I believe that you are the most suitable for the art of Shinryu. Perhaps fated to use it even. Would you like to give it a go? Seems interesting. Well, if you're interested, just imagine the platform in front of you as the Shinryu arena. Then I will tailor-make the most suitable battlefield for you by the power of Shinryu. Be careful and mind you don't get hurt after all. Shinryu can be a truly weakness. भाग गया बंदा. बंदा भाग गया. मतलब लड़ना की है. Unlocks after 4 hours. एक बार चलो एक्सट्रीम ट्राई करते हैं. There's no way to my hammer. Submit for judgment. Everybody stand back! One with nature. Clouds high. The birds call. The wind knows it. From whence you came. Going in! Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. One with nature. Shake your ass, skirt! Can't handle you! One with my blade. Swift and merciful. Everybody stand back! The wind knows it. As one with wind and cloud. Into the wind. Knife. No character deaths during the challenge. Defeat 25 opponents and time between kills cannot exceed 25 seconds. इसका नॉर्मल भी हो गया, हार्ड भी हो गया. अभी ओकुटेन. ठीक है, एक मिनट. आई थिंक ये टीम में अपने को क्या चेंज करना पड़ेगा. चीची लेनी पड़ेगी. डियोना के बदले चीची लेता हूँ. I'm here. I'm here. One with my foot. I'm going in! Move! The wind knows it. Clouds high. The birds call. Into the wind. My blade! Submit for judgment. Swift and... Adventure time! Everybody stand back! The wind knows it. As one with wind and cloud. Spirit blade. Attack. One with my blade. Nice. Let's light it up! Teamwork is dreaming! Over! One with nature. Clouds high. The birds call. The wind knows it. Submit for judgment. A touch of frost.
Benny's. चैलेंज फेल्ड, कैरेक्टर मर गया। भाई बेनी तू मर गया। What's one more? How's this? Suffice. From whence you came, swift and merciful. That's gonna hurt in the morning. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Everybody stand back. बेनी वापस मर गया। Let's get down to business. The wind knows it. Life goes on. My blade! ओ भाई साहब ये क्या है? दोनों मर गए। भाई बड़ा डेंजरस है ये लोग। Time to go. Wheel of life. कंप्लीट तो करेंगे भाई। Let's get down to business. Sacred name. Fortune preserve. One with nature. Let's light it up. As one with wind and cloud. The wind knows me. Teamwork is dreamwork. Submit for judgment. Void my blade. भाई एक फटके में मर रहे हैं यार ये। Into the wind. Fallen leaves, adorn my You know a night. thing or two. Going in. Off we go. Life goes on. Opening box of adepti tricks. I cannot underestimate. The wind knows me. Adventure time. As one with wind and cloud. Into the wind. Teamwork is dreamwork. From whence you came. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows it. Going in. Spirit blade, attack. Into the wind. As one with wind and Golden cloud. one with nature. From whence you came. Everybody stand back. The wind knows me. Sacred name. Fortune preserver. Spirit blade, attack. Fallen leaves, adorn Adorn my night. into the wind. Going in. Wheel of life. From whence you came. That hurt. As one with wind and Golden cloud. Everybody stand back. a touch of frost. Wind strike. Submit for judgment. Done. Done.
अभी इसका ओकुडन क्या है? ओकाइड। सीधा एक्सट्रीम ही करेंगे और क्या? Go. Swift and merciful. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. Let's light it up! Going in! Spirit blade, attack. Orders given. Orders received. Let's light it up! One with nature. Clouds high. The birds call into the wind. Melt you down like ice cream. नया अचीवमेंट मिला है। Dreamwork! From whence you came, a touch of frost. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. Spirit blade, attack. Everybody stand back! One with nature. Clouds high. The birds call. Swift and merciful. Submit for judgment. Into the wind. I'm going in! Let's light it up! Done. Wheel of life. Spirit blade. Attack. Teamwork is dreamwork! Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. A touch of frost. From whence you came. Off we go! Let's light it up! One with nature. Go. I'm going in! Swift and merciful. The wind knows me. As one with wind and cloud. Into the wind. Didn't see that coming. Spirit blade. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Wheel of life. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Out of my sight! Everybody stand back! From whence you came. Let's light it up! Majesty's power flows through me! Adventure! I'm going in! Wind strike. As one with wind and cloud. This time! Submit for judgment. Forth my blade. Into the wind. Everybody stand back! One with nature. Fallen leaves, adorn my night. Let's light it up! Mirror images. Teamwork is dreamwork! Into the wind. Spirit blade, attack. Let's light it up! Go. One with nature. Everybody stand back! Adventure time! Clouds high. The birds call. Into the wind. Submit for judgment. One with my blade. Discourage.
टाइम का इशू हो गया। कोई नहीं, अच्छी चैलेंज थी। 20 कैरेक्टर्स हरा तो दिए, टाइम का इशू हो गया। कोई नहीं, अच्छा चैलेंज है, बाद में करेंगे। ये अनलॉक करना बाकी है ना। चलो इसको अनलॉक करके देखते हैं। पैसा The wind knows me. Let's light it up! Into the wind. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Off we go! I'm going in! Let's light it up! I cannot underestimate my enemy. अच्छा, इनके दोनों के मरने के बाद ये दो हैं, ये साथ में नहीं आ सकते थे। As one with wind and cloud. Into the wind. Life goes on. Faster? Okay, faster. ओके, इधर अपना ये है। Cannot switch character while gliding. The wind knows me. One with nature. Wind strider. Wind strider. ये ना हर बार की तरह मैं भूल जाऊंगा। आई थिंक वापस आना चाहिए मुझे। अरुण, अंडर वाटर कुछ तो है, चमक भी रहा है।
There is something underground. Time to go. Kazu, self-proclaimed treasure hoarder. Kadre. Kazu, if you've got something to say it fast. Us treasure hoarders are times not yours for the wasting. What are you doing here? What else could it be? I'm one of the treasure hoarders, so I'm here for the treasure, of course. Okay. Why don't you go inside? Are you trying to get me killed? It's dangerous inside. Well, if someone were to get the treasure first, what I don't know about can't affect my bottom line. There's a treasure hoarder patented survival technique. Jeez. क्या बकवास treasure hoarder है. Let's get down to business. The wind knows me. There's more! Time to go. बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम. अपन वहाँ उड़ के ही जाएगा. ओहो, इधर चेस्ट है. बहुत टाइम बाद एक चेस्ट दिखा. डिस्ट्रैक्शन के लिए हम हैं नंबर 1. Teamwork is dreamwork! Wow. Clouds high. The birds come. Ooh, that's gonna hurt in the morning. शिप लेके इसका पीछा करना पड़ेगा. मैं इधर आ चुका हूँ. इधर से कुत्ता को छुड़वाया था हमने. और यहाँ से टेलीपोर्ट करके जाना है लगने के लिए.
ओ अपना एक कैरेक्टर मरा पड़ा है। Wheel of life. Off we go! A touch of frost. I'm going in! 40k। Off we go! Adventure time! हेल्थ वाला किस कौन सा है? ये रहा। Let's light it up! Go. Teamwork is dreamwork! One with my blade, from whence you came. One with nature, as one with wind and cloud. And cloud. Forth, my blade. Submit for judgment, swift and merciful. I'm going in! Fallen leaves, adorn my night. अरे शील्ड आ गई वापस। Off we go! A touch of frost. Rise. Faster. Let's light it up! Wind strider. One with my blade. As one with wind and cloud. Into the wind. Everybody stand back! From whence you came. Done. अरे हेल्थ कम है, रेजिन कम है क्लेम करने के लिए। चलो कोई ना, हरा तो दिया एक बार। क्या हुआ, जा क्यों नहीं सकते? I ride on wind and cloud alike. क्या एक बार क्लेम करना जरूरी है? क्या है ये? पता नहीं, एक बार क्लेम करना जरूरी था क्या? जाने नहीं दे रहा। A touch of frost. आई थिंक फिर उस साइड से जाना होगा। One with nature.
ऊपर कैसे जाया जाए? आई थिंक जब तक क्वेस्ट के पीछे छुपा हुआ है फिर मतलब ये। चलो भाई, हमने तो ट्राई कर लिया। Add Astra. अचीवमेंट देखते हैं क्या अनलॉक हुई है। Defeat smells like animal spirit. Defeat a pyro hyperstation after being hit by its Memtemic 3-hit combo. Okay. Melt you down like ice cream. Defeat 4 opponents with melt within 2 seconds. अभी भी है कोई एक, मैंने न्यू अनलॉक करी है मतलब। After listening to the tale of the wrath of Aishin once upon a time. Lend me your ears. ये कौन सा है? ट्रेवर्सल मॉर्टल ट्रैवल सीरीज रन। Oh hey. Time to go. Okay. Now. मेरे हिसाब से पहले चलते हैं, कोई एनिमी है जिसको हराना है। स्टोरी क्वेस्ट थोड़ी देर में चालू करते हैं, उसके पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। कस्टम पिन, कोई एनिमी, हाँ एक ये एनिमी है जिसको हराना है। लेट्स फाइट दिस एनिमी। ये क्वेस्ट भी है। और चोंग्यून, बेडो का वेपन फुल्ली मैक्स्ड आउट हो गया। इसको 4 सेट नोब्लेस दिया हुआ है, इसको फुल सेट नोब्लेस दिया हुआ है। क्रिट रेट, इसको डिफेंस का क्यों मिला है? अटैक ही देता हूँ ना, या एलिमेंटल मास्टरी। अटैक ही देता हूँ अभी के लिए।
जानफे को इतना बढ़िया क्यों दिया उन्होंने? तो भैया तुम लोग हाय रणबीर संदीप गुलाटी कैसे हो भैया? हेलो हाय, क्या हाल है? हाँ हेलो हेलो, मैं बढ़िया हूँ, तू सुना? ठीक बस की बैड, ठीक बैड बस ठीक, बस मैं भी बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? There are leaves around, and I know मैं तो just the बस tune to खेल accompany them. के आया हूँ। क्या खेल के To आया? hear it. Time to go. फुटबॉल, क्रिकेट? कल राखी है, हाँ कल राखी है। जा रहा है दीदियों को मिलने, या दीदी आ रही है तेरे घर पे? भैया टोक्यो रिवेंजर देखा है क्या? मैंने उसका एक एपिसोड देखा, तो मैं सोचा कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखूंगा, तो अभी तक तो नहीं देखा पूरा। टाइम ट्रैवल वाला है ना ये? हाँ इधर बॉम्बे में भी बारिश बहुत तेज चल रही है। हमारे यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, पूरा हाईवे पूरा ये जैम है। अच्छा बुआ आ रही है, सोनिया दीदी? तो बुआ और आर्य मना रहा होगा फिर। हाँ मैं देखूंगा, टोक्यो रिवेंजर देखूंगा, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए फिर देखूंगा। ओके चल ये देख, मैं इसको हरा के दिखाता हूँ। नेमलेस, why can't I find it? What are you looking for? I'm looking for I've forgotten. Each time I think I'm about to remember it, it disappears from my mind. Hey, do you know what I'm supposed to be looking for? How would I know? Have you looked in all your pockets? I already have. It isn't on my person. Even though I don't remember what I was after, I can tell when something's not what I'm looking for. Whatever it is, it's not on me. Come on, what is it? What am I looking for? Curses, why can't I remember? It'll pop into your mind eventually. Think back to when you arrived here. When I got here, all I remember doing here is wielding my sword. As for why I was wielding it, aha, yes, now that I do remember, I was executing someone. If you strike your enemy with your sword, blood surges like a river of red. It gives you a real rush. Ha ha ha. When was my sword last stained red? It must have been a few days by now. Well, at least you're here today. For now, let's leave aside the question of what I was looking for. I've tried myself out, tired myself out, thinking about it for so long. Now I need to relax. It's been a while since I brandished my blade. I can hear Chika Dosetsu complain. Oh, listen, she's calling out because she wants to cut you into pieces. Having a duel with you would make her happy indeed. Are you okay, bro? You can't hear Ichika Doseku's voice? What a pity. What a pity. Those who live by the sword know to listen to the voice of the blade. She's nagging me to get on with it again. Come, draw your weapon. Try your chances against me.
भैया ये तो मारने पे उतर आया हमें. Come, draw your weapon and try your chances against me. Let me Real try. life. Let's light it up! Wind Strider. Let's light it up! Extreme work! Clouds high. The birds call! Challenge completed. I am defeated. I have cut countless people down and have never lost. Now that I've tasted defeat at your hands, I have bet and lost. I shall have no regrets, even if it costs me my life. I won't do that sort of thing. You should really just stop. Aha, I draw my sword to kill. You do not. You fight strangely, and your bearing is far from normal. Not at all like those who I cut down. Which school do you belong to? I'm just a traveler. I'm willing to say it matters little. I remember nothing at all. So even had you mentioned your school of swordsmanship, I would not recognize it. Who was I? What did I do before drifting here? I no longer remember any of these things. I only feel familiarity and peace with my sword in hand. Someone as lost as I must be doomed to wander this wasteland. I can try to help you, but not knowing even my own name, I cannot do anything but wander the world like a ghost. How can you help me? I do not know if I have family or where my hometown is. There is nowhere for me to go but here. The only connection I have to that past is my swordsmanship. And where did you learn yours? Who did you learn that sword from? My lineage. I no longer recall it, but it could not have come from nowhere. On this map, there is little hope for those who have no background at all. Even if one begins training hard from an early age, they cannot receive accurate instruction if they cannot pay a master to tutor them. They will have to go through many twists and turns than an average person. Without a good sword, they can only go to a smelting plant to look for a discarded inferior blade. Though it may be inferior, they would cherish it and even give the blade a name. They would train with every ounce of sweat in their body, and after many wounds and much persistence, they would gain a foundation, and yet they would still be weak. Without a friend by their side, they would not be able to go on. Wait, why does this all feel familiar? I think I remember something. 2 children wielding swords and sparring next to their family homes. A hut. Yes, they lived in a hut in a fishing village to the north. The hut was under a cliff and surrounded by sea on all sides. They would take the steps behind the house to the slope to spar. Their blades might still be there. But who were they? My head hurts. I can't remember. Didn't you say that you would help me? Then please help me find those 2 sword-wielding children and bring me their swords. I think their swords might be related to me somehow. I understand. A samurai's word is his bond. I will wait for you until you have brought me those swords. चलो इस भैया की याददाश्त वापस लेकर आते हैं. जो एनकैम्पमेंट से उड़ के जाएंगे. Wind Strider. Follow the wind. Go. Time to go.
You really think that the weird kids live here? Into the wind. Time to go. Let's get down to business. चलो एक sword तो मिली है. My blade. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Time to hide the buried. Into the wind. Time to go. ये ड्रामा देख रहा है तू आजकल रणबीर? सही होते हैं. हाँ मैं तो काफी टाइम पहले से देख रहा हूँ. नाइस गेम प्ले. थैंक यू. तू भी खेलनी चालू कर. बहुत अच्छी गेम है ये. फिर साथ में भी कभी टाइम रहा तो खेल लेंगे. Time to go. ये फ़ोन पर भी है. मैं तो फ़ोन पे भी खेलता हूँ और स्ट्रीम करने के लिए पीसी पे. भाई फ़ोन पे भी ऐसे ही ग्राफिक्स है इसके. Knows me. बहुत बढ़िया गेम है ये देख. मैं के ड्रामा तेरे को व्हाट्सएप पे रेकमेंड कर देता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने मैड फॉर ईच अदर नेटफ्लिक्स पे देखा है. नेटफ्लिक्स है तो एक मैड फॉर ईच अदर अच्छा है और गॉब्लिन द ग्रेट एंड लोनली गॉड वो वाला देख सकता है. You called? स्टार्टअप वाला के ड्रामा मैंने अभी तक नहीं देखा. आई थिंक बेस उजी है उसके अंदर. रैकेट बॉयज मैंने नहीं देखा. चल इसको तलवारें लाके देते. हैव यू फाउंड द swords? I remember this is one of the two children who used this sword. One of the two children used this sword. ये कौन सी जगह है? ये इनाजुमा है मैप के अंदर. तो मॉन्स्टैड, लीवे और थर्ड मैप का लोकेशन है इनाजुमा. दिखाता हूँ मैं देखो बाद में. पहले इसका स्टोरी लाइन कंप्लीट करते हैं. That child, he and his friends sneaked off to the smelting plant to obtain two identical swords that the smiths had discarded. The finest of blades were made there, but these two were of an inferior make. So those two children, I remember now, they would be mocked by others for not being able to afford swords made by the famous smith and for using junk. I see. As long as I can slay foes in battle, it's a good way. Who in this world is born bearing gold and jade? Nor does the battlefield distinguish between the noble and the lowly. Samurai. Have you been ever on the battlefield? I am no samurai. क्रैश लैंडिंग ऑन यू बहुत अच्छा है. हाँ मैंने देखा हुआ है. वो काफ़ी अच्छा है. नेटफ्लिक्स पे देखा था. बंदी साउथ कोरियन बंदी नॉर्थ कोरिया में क्रैश लैंड होती है. फिर उसको बंदा मिलता है. ये कौन है? समुराई. समुराई कौन है? समुराई कौन? हैप्पी. समुराई का नाम ही नहीं है. देख नेमलेस समुराई है. भैया ये जोरो है क्या? नहीं भाई जोरो
कि फिर भी याददाश्त थी, वो बस भटका रहता था। इसकी तो याददाश्त भी नहीं है, नाम तक नहीं है। देख पूरा पर्पल कलर का, जोरो तो पूरा वाइट और ग्रीन कलर है। बहुत सही है, हाँ भाई बहुत सही है। डिज़ाइन बड़ा सही बनाया हुआ है इन्होंने। तलवार देख कितनी बड़ी तलवार है इसकी। हाइट देख हमारी इसके पेट तक भी नहीं पहुंचते हम। You have sought out a master despite your abilities. Folly. You have not sought out a master despite your abilities. Folly. You should. One strike and one strike only is all it takes for someone to fall, whether they be a mighty general or a lowly ashikaru. Aha. But I cannot die. No matter how many swordsmen or ronin come to challenge me, I was never defeated. Those who are only swordsmen in name, they fled or they were all cut down. Ah, you are the only one who has managed to defeat me. Curses, curses. How did I lose? Curses, curses, curses. Again, we will go again. I will not lose this time. चल भाई इसको एक और बार मजा चखाते हैं। Let's duel once more, you and I. वन पीस के तू 642 पेज पे आ गया, एपिसोड पे आ गया भाई। बहुत बड़ा है। तो क्या कर रहा है इतना एपिसोड देख के? अभी तक तो खत्म भी नहीं हुआ, 800-900 पे पहुंच गया वो। I will let you prepare Ichika Dosetsu and I will be here, no matter how long we must wait. Use your full strength against me once you're ready. आना भाई, चलना लड़ने का। Many have said this before, Ichika Dosu. Cut them down. How many blows will you withstand? वापस से फाइट करेंगे अभी अब इसके साथ। एक मिनट इसको हराने दे, फिर देर से बात करता हूँ। Let me try. Wheel of life. I'm going in! Clouds high. Birds call. अभी ये देख। Will end you. Cut down. अरे यार मेरे को जाओ से मार रहा था इसको। This. मर गया, बहुत जल्दी मर गया। जाओ से मारने वाला था इसको मैं। हाँ, वैगाबाउंड मैंने देखा नहीं है। ईटावन क्लास हाँ वो देखा हुआ है, वो अच्छा था। इट्स ओके टू बी नॉट ओके भी अच्छा है, मैंने वो नहीं देखा है। बीजीएम की स्ट्रीम मारोगे क्या? नहीं, मेरे को बीजीएम से ज़्यादा ये बहुत अच्छी लगती है। गेम के ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है और गेम प्ले बहुत बढ़िया है। और मेरे साथ मेरा फ्रेंड खेलता है विनीत, तो मैं उसके साथ बात करने के लिए भी कुछ मिल जाता है। इस वक्त तो मैं सिर्फ यही गेम खेल रहा हूँ। You have defeated me again. Will you not tell me where you learned your swordsmanship from? I have told you I'm a traveler. Do all true masters hide their true selves like this? Never mind, I shall not pry. It has been so long since I felt this fulfilled, discarding all pointless thoughts and giving myself over to the blade. How strange, my body remembers this refreshing feeling as well. It's almost like I could gain acceptance, own everything in this world when I was wielding my sword, when my all was focused on winning victory. Yes, that's it. I once wielded the sword to sunder many armored bodies. I remember how I felt then. अच्छा, फ्रेंड के साथ खेलने का मज़ा कुछ और ही होता है। हाँ, मैं मेरे फ्रेंड की वजह से एक ये गेम खेल रहा हूँ और गेम प्ले नो डाउट अच्छा ही है, गेम भी बहुत बढ़िया है। शूटर वूटर खेल खेल के भी बोर हो जाते हैं, ये अलग चीज़ है, डिफरेंट है थोड़ी। आरपीजी है, बहुत मज़े आते हैं फ्रेंड्स ने साथ खेलने में, चाहे कोई भी गेम हो। हाँ, ये गेम एक्चुअली काफ़ी फेमस है
मतलब इंडिया के अंदर इतने लोग नहीं खेल रहे, पर बाहर बहुत खेल रही है पब्लिक। उल्टा फोर्टनाइट से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ये इस वक्त। बीजीएम वगैरह इंडिया में वैसे बीच में बैन हुआ था, पबजी बैन हुआ था, तो और उसी वक्त ये भी लॉन्च हो गई थी, तो इस वजह से इसका पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ये गेम खेल रहे हैं। I remember how I felt then. Mura and honor could all be gained by the sword, as long as I had the last laugh at the end of the raging battle. What did anything else matter? To the victor go the spoils, the glory. So I had such moments of satisfaction in my time, did I? When I was crowned with honor, acknowledged by my superiors, when the wine flowed freely. Why? Wine. How could I forget the wine I drank under the moonlight with my companions? I miss that taste. You've remembered? I remember now. I remember drinking wine together with people. It was a long time ago. I remember that when we were inside a great encampment, men armed and dressed in armor were all around us. We said something then. No, I can't remember. Perhaps you'll remember if you drank the same wine from back then. You'll help me find that wine? I can. I am in your debt. Perhaps I shall indeed remember my past if I drank the same wine that I did back then. Armored and armed men. Does he mean soldiers from an army camp? If we head east from here, we'll reach some land that's mostly flat. Maybe that's where the camp is. ये रहा कूजो एंकैम्पमेंट। Foreign! Do you know of a nameless samurai, huh? Born into a fishing village, joined the army, and that manages speed. I think I know who you're talking about. After that last battle ended, a lot of folks went missing in action, that guy included. Usually people who end up unaccounted for have either deserted or, bought a farm. But that guy, with his skill, I don't think any of those riffraffs from Sangonomiya could have beaten him. Could have beaten me. I thought he'd fled. खूजो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये एरिया जापान के ऊपर बेस्ड है, तो खूजो कोई ना कोई एनिमे कैरेक्टर का नाम हो सकता है। देख इस बंदे का मात्सुदाइरा फुल जापानीज नाम है। I never would have imagined that he'd lost his memory and become a madman who only knew how to draw. So, well then, were you here to ask about him or do you want something else? I'd like to know about his. Please help him regain his memory. I wouldn't necessarily call losing your memories of the battlefield a bad thing exactly, but you look like a good person. I mean, you came all this way here just to help him out. As a old friend of his, I would like to help, but as you can see, I have my duties here. I cannot leave. I just need the wine that he drank in the past. Wine? That's all you need then. I've got it. I'll give you my personal bottle of it, in fact. Back then, when he was in the army, he, a friend from his hometown, and I would drink together. They were both of lowly birth and would often be ostracized by those fools from richer families. He was a rough man who didn't care a bit about being excluded. He just threw himself into battle all the same. The general at the same time quite liked him and raised him and his hometown friend to the rank of Hatamoto. But during that battle, I always come back to something awful whenever I think about the past. There's no point in nattering on, so I shan't. Well, you have the wine. If there's nothing else, best you take your leave. This is a military encampment after all. If you tarry here too long, people might get the wrong idea.
कोड गियस के अंदर तूने कूजो नाम सुना हुआ है? अभी इसके अंदर एक कैरेक्टर भी आने वाली है कूजो सारा करके। कोड गियस भाई बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा है ना एनीमे तो देख ले। ललूच ऑफ द रिबेलियन। The rain stopped. I don't concern myself with the weather. Mao. Mao, this means that than you in Korea. जापानीज में माओ मतलब डीमन लॉर्ड। डिड यू फाइंड द वाइन? हाँ भाई ले ले। This wine, it's bitter. That's not right. I remember the wine we drank before wasn't like this. It only had the taste of excitement and joy. We took names and won glory. Should we not have been pleased with ourselves? And yet, why does this wine go down my throat so bitterly? And this bottle, I remember it. It has to be. He would take this bottle and he would say, "Come on, Manasuri, have another." Manasuri. Is that my name? So that's your name, Manasuri? Yes, I remember. I would often drink with the same person. He and I were like brothers, and we would talk often. अच्छा कोरियस तूने देखा हुआ है? ठीक है. But there was just this once when he had something that led to an argument, and so he left. He was my brother in arms, through thick and thin. Then why would he just leave like that? Why? What did I do wrong? Do you know, samurai? You probably need to ask yourself that question. Maybe it's for the best that you don't know. But I want to know. I must know. Please, I want to know. I want to. My head, it hurts. Please, I beg you, bite me once more. Use your blade to help me. Help me remember everything. Well then, have at it. Let's cross swords. Papas. मारेंगे इसको। What's one more opponent? Boring. Let's light it up. Teamwork is true. Wind strike. As one with wind and cloud. Evil conquering. Worthless. इसका एक दो फटके से एंड में मर गया यार, मजा ही नहीं आया यार, बहुत जल्दी मर गया ये। वेटिंग फॉर डीमन स्लेयर सेकंड 2। हाँ भाई सब लोग वेट कर रहे हैं। एक मूवी आ गई, मूवी के बाद सीजन 2 का ही पब्लिक वेट कर रही है। ये किमेत्सु नो याइबा। Defeated by the same person thrice. How am I this weak? I have honed my martial arts ability from childhood to today. How am I so useless? I'm a useless samurai. Wait, I remember now. I saw a sword fall from someone's hands, and it wasn't Ichigan Dosetsu. The sight of that sword sent me trembling all over, and my courage failed me. I feared that fallen sword, and I fled from there, and ended up here. And where's that place? I fled here from the tidal flats in the northwest. That was where the battle took place. Why was I so afraid of that sword? What happened then? I'll help you remember. Remember? I have to remember. That sword. Oh, क्या फाइट थी। हाँ भाई ऐसी होती है फाइट्स, बट बहुत जल्दी खत्म होगी। मेरे को ये ना इसको इससे हराना था, जाओ से। तेरे को मैं ना एक बार जाओ के साथ खेल के दिखाता हूँ, देखो समझेगा क्यों। ये ना बंदे को कूद के मारता है। कोई मिलने दे, कोई बकरा मिलने दे, कूद के मारूंगा।
Useless. चल इसके साथ ट्राई करते, मिरर मैडम के साथ। Clouds high. The birds call. Into the wind. Life goes on. I'm going in! ये देख, अभी देख, ये देख, ये कूद कूद के मारेगा ये। Worthless. What's one more? Demons do not stop for the race. Let's get down to business. Useless. Let's light it up! One with nature. One with wind and cloud. The wind knows me. Evil conquering. Here. यार मैं जब तक स्विच कर रहा हूँ तब मर ही जाते हैं। Adventure time! जंपिंग बॉय, जंपिंग बॉय। Boring. ओहो आ गए। You know a thing or two. There's more. Wind strike. Finally, useless. The rain stopped. I don't concern myself with the weather. The fairy. गिरी तलवार। भाई मजाक कर ले, मैं भी इसका मजाक बड़ा उड़ाता हूँ। पर ये स्प्रिंगेज है क्या? स्प्रिंगेज क्या होता है? Boring. One with nature. The wind knows me. Time to go. Lament! Here! 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 और ये स्प्रिंग्स पेज है क्या? स्प्रिंग्स क्या है? स्प्रिंग्स पेज क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रही है। Faster? Okay, faster. हाँ, पैर पे स्प्रिंग्स पड़े हैं क्या? ओके। हाँ, सिर्फ इसी के पैरों में स्प्रिंग्स है। इसके और इसके भी, ये देख इतना ऊपर कूदता है ना ये। Fallen leaves adorn my night into the wind. You know what I think to do. Go. Teamwork is dreamwork! Disappear.
Here! Worthless! Here! Worthless! Time to go. Spring Man to the rescue. अरे भाई ये तो गॉन और किलुआ से भी ऊपर कूदते हैं। हाँ भाई ये देख, मैं इधर चोटी पे हूँ ना, ये बंदा इससे भी ऊपर कूद के नीचे जंप मार देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। Into the wind. ये देख, इससे कूद के दिखाऊं, ये देख, ये बंदे के साथ इसको तो चोट भी नहीं आती। ये कितनी भी ऊंचाई से कूद ले, इसको चोट भी नहीं आती है। ये देख, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसको। Let's get down to business. Wind strike. As one with wind and cloud, one with nature. Lament. Worthless. Finally. और ये देख, अभी इतनी सारी चीजें पड़ी है ना, ये देख इतनी सारी चीजें पड़ी है, जाके ऐसे उठाऊं वो बड़ा बोर होता है। ये बंदा कूदता है, नीचे आता है, सारी चीजें सामने आ जाती है और मैं ऐसे उठा लेता हूँ। ये तो गोकू से भी स्ट्रॉन्ग है लगता है। इसने पेन ड्रेवल फूड खाया है। नहीं भाई, गोकू से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो ये समुराई का क्वेस्ट जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। थोड़ा बोर भी करने लगा, इतनी देर हो गई है, इसकी याददाश्त ही नहीं वापस आ रही पूरी तरह। मानासुरी, नेमलेस, रिमेंबर, आई हैव टू रिमेंबर द स्वॉर्ड। हाँ ले भाई। This is that sword. Yes, that was his sword. But where is he? Where did he go? We agreed to go home together. What's come over you? Why wasn't he there? Ah, how can this be? ये क्या हो गया? इसको क्या हो गया? ये क्यों? अब मौका मिला इसको मारने का। जाओ के साथ। Worthless. Here. Worthless. Boring. ओ भाई, हेल्थ भी रीजनरेट करता है ये। The birds call into the wind. Let's light it up. Life goes on. भाई अब थोड़ी चैलेंज दी है इसने। Teamwork is dream. Evil conquering. Here. कूद के मारूंगा भाई तेरे को। ओमोशिएंदा।
अरे टैंक करने के लिए बैठा है, सब कुछ याद है इन भाई को, मजाक कर रहा है, कर रहा हूँ। ओ भाई पेड़ डाला, हाँ भाई मेरे को लगा था कि थोड़ा सा ये पंगा लेगा, बट इन दी एंड हमारे जाओ भैया ने पेल दिया इसको, कूद के मारा। पर लड़ेगा और लड़ेगा, हाँ हाँ बड़ा लड़ रहा है, हाँ 3 बार मार खा चुका है फिर भी बाज नहीं आ रहा, लड़ेगा तुमने, हाँ हाँ सर पे टपली मारूंगा तेरे आया माना सॉरी। I have truly been defeated. I put everything on the line to wield my sword, but the martial arts that I so worship, they have been truly and pathetically beaten. Have you awakened? So you're not going to spar again? You need not worry. I lost control earlier. Never again will I raise my hand against you of my own will. I fought you to my heart's contents 4 times. 3 बार भी नहीं 4 बार मार कर चुका है मेरे से. And discovered some shattered memories. Obtained 2 swords and a bottle of wine. I'm satisfied. Moreover, the more I remember, the more I feel anger. And a deep pain rise from within me. Perhaps my past is indeed far from a beautiful story. I doubt I will gain much from becoming obsessed with it, so it's best that I put it down. Nonetheless, I believe it to be greatly fortuitous that we met. I do not regret it. The feeling is mutual. Ah, you are indeed straightforward. I shall also be frank. I may be to you as a defeated foe, but if you are willing, I still wish to exchange pointers with you. Warriors make friends best when their swords clash, rather than when they talk around it even. I, Enichiga Dotetsu, will remain here, watching the sea and listening to the wind. We will be here anytime to speak to you, should you wish. समुराई भी सोच रहा है पिटने के बाद why are we still here just to suffer lol. हाँ इसको तो मार खाने की आदत हो जाएगी. देख इससे मैं वापस बात करता हूँ. You are here, shall we spar? Well, then have at it. देख मार खाने के लिए रेडी बैठा है ये. Rise. Useless. As one with wind and cloud. This will do! I'm going in! Disappear! Is this? मर गया मेरा जाओ. Fallen leaves, adorn my night, one with nature. इतना बर्स्ट रेडी किया था मैंने कि क्या मारूंगा इसको कूद के. Adventure time. Wheel of life. रहम कर दो बेचारे पर, बहुत मार खा रहा है. वो कुछ नहीं होता है, वो मार खाने के लिए बैठा है. Let's light it up. Everybody stand back. Wind strike. Lament. नहीं भाई रहम नहीं, इसको कूद के ही मारना. Boring. Useless. Taste my blade! Don't worry, I got this. As one with wind and cloud. I'm ready! Wow. पिटा है वो तो भाई, बहुत पिट रहा है बट अभी भी जिंदा है. तो मैं भी पिट रहा हूँ साथ साथ. Isn't over! I'm ready! I'm going in. Disappear. Worthless. Here. This
Worthless! One strike must fall for me. Boring! Go. Clouds ये high. मेरा कादुआ ही हरा देगा इसको। Cut down. Like As one with the wind and cloud. या वो काजुआ का डायलॉग है, एंड में यही हराता है। As one with the wind and cloud. Disappear. Follow my mind. Come driving. Ch! Ch! Ha! Wind Strider. Into the wind. The wind Wind knows me. knows me. One with One nature. with nature. Clouds hide, the birds fall. Clouds hide. The birds call. As one with One wind the and wind cloud. cloud. Fallen Fallen leaves. leaves Adorn my night. night. Chalo. Bye bye. I'm going in. Time to go. Time to go. I follow the wind. Follow the wind. Huh. Not bad. I must remain calm. Stay focused. और यही जाओ भैया का डायलॉग है। If you awake, Boring. Useless. Useless. Here. Here. Worthless. Useless. Disappear. Here. Evil conquering. Ring. Lament. Lament. Shut it. Prepare to That you die, die. fool. Disappear. जाओ बोलता है हाँ। Disappear. Disappear. मेरे को तो बेनी का बहुत मस्त लगता है जापानीज के अंदर। बोकेन मैंने बट आई थिंक जापानीज ऑडियो डाउनलोड नहीं करी हुई है। देखना पड़ेगा एक मिनट। Owner, Zok. ये रहा बेनी बॉय। Moero. बोलो 天に召せ तेन निवे से はあ आहा 吹き飛べ 聞いとけ全員どけ全員解けみんなは俺が守るみんなおげん任れ全力攻撃だみんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない冒険だ冒険冒険だ冒険エドベンチャータイム冒険だ冒険よし出発だまずい最近包帯が値上がりしたっていうのに एक मिनट जाओ क्या बोलते हैं जापानीज में सुनते हैं くだらない खुद रहा है 無駄だ मुंह दा ここだ खोखदा 無能 मुंह 消えろ quiero 西洋ナブ से yo nab わめくがいい वहाँ में कुआई 黙れ दब 愚か者め और खबर ने よかろう यो करो これは報いなのかこの日つい और यही काजुआ का सुनते हैं 参るはっ हाँ 風よ खासे हो 風の行く先よ खासे नो युकी सखी हो 風を知れ खासे हो शिरे 風の赴くままに खासे हो मोमोको मारी 雲隠れ借りなく時風のむた雲の行くごともみちばを散らまく惜しみいざ いいさ風の流れる方へくやりおる精神統一 दामा रे ये क्या बोलती है どけはあ全部返してやるくらえ पूरा है これが海山を滅ぼした力だよく見ておけ炭になるがいい
まだまだ逆に元気が出たわ चल थोड़ी देर जापानीज में खेलते हैं गेम until we meet again एक और बंदा है मेरे को जिसको हराना है वो ये रहा大雨の中を歩けば精神が研ぎ澄まされる नामी की し वॉइस かし लगता है 雨が止んだ後は急いで服を乾かした方が良いでござるなほれはっ This shall be called the duel on Snake Mountain 風よそこだ錆びと燃えろ再生入れてイエッへっはっひゃっわめくがいいへっここだ無能せここまで wonderful such a swift play चलो फाइनली एक और एनिमी वर्ल्ड का खत्म हो गया रखो इधर एक श्राइन होनी चाहिएくだらないठीक है बाय कल की तैयारी करनी है नाइस गेम प्ले चल बाय रणबीर行くぞ大勢でかかってきても構わんवो विश वाली श्राइन की तरह मेरे को वो ढूंढनी थी ये सीढ़ी है ये है एक無駄だくだらない That guy over there looks suspicious. Let's go and see what he's up to. 行くぞ You're back.
अरे ये देखो लकी विश वाला मैं हर सैटरडे वेट करता हूँ क्या मेरे खेलने का गेम प्ले का अरे मैं ना लास्ट सैटरडे संडे मंडे मेरे को टाइम नहीं मिला वरना मैं भी खेलने वाला था मैं खुद वेट करता हूँ कि कब मैं खेलूँ बट काम रहता है ना तो इसमें बिजी रहता हूँ चल मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा खेलने की सैटरडे को ओहो इसी से अनलॉक होता है इसी से अनलॉक हुआ नहीं भाई नहीं लगना है कैसा करूँ अपने को वो सस्पिशियस बंदे के पास ही जाना है काम इज मोर इम्पोर्टेंट वो भी है बट छोटी छोटी चीज़ें रहती ना जो मंडे टू फ्राइडे बंदा काम नहीं कर पाता तो वो सैटरडे संडे ही करनी पड़ती है I'm nobody suspicious I swear just a local doctor if you don't believe me I can take you to my place if you want anything take it please just let me go or take me to your general Lord Kujo he knows me how suspicious I think there's been a misunderstanding. Oh, you don't look like someone from the shogunate or from Sangonomiya. Are you an outlander? What are you doing here? It's a long story. Well, anyway, you'd better leave here as soon as possible. Yashishori Island is very dangerous now. So far, there is no sign that the Tatarigami will disappear, and the Tenryo Commission is not going to withdraw anytime soon. The island is no longer inhabitable, let alone suitable for sightseeing. If you are fleeing arrest by the commissioner, head west. The Tenryo Commission does not welcome unknown fugitives, but the pirates might take you in. What happened on the island? You look dejected. Have a look for yourself. See what the city folks and Sangonomiya's people have done to us. First, it was the explosion in Tatarasuna. The sky was stained with strange colors that night. Many of my relatives and friends lost their jobs, and now we live in poverty. Many others were badly injured, and they were terrible to look upon when they finally arrived home. Many of my friends didn't manage to escape. Then Sangonomiya अरे मेरे काजुआ को उड़ा दिया बिजली ने कट सीन के अंदर ही काजुआ उड़ गया. Then Sangonomiya's people destroyed the wards which suppressed the serpent's remains. The Tatarigami arose and everyone on the island fled in panic. The strange diseases brought by the Tatarigami are also spreading. Many of the residents here have become very ill. I'm afraid it's just a matter of time before it spreads to the camps of both armies. Where am I? हाँ उड़ के पीछे उड़ गिरा है तू. This was one of the key places the crystal used in the making of Inazuman jade steel was produced. As long as the crystal didn't run out, we could live comfortably without being constrained by the city folk. And now you can barely find anyone alive on the island. I mean, like me, humans who can speak normally. Why don't you leave? You think I don't want to leave? That son of the Tenryo Commission has invited me before. He should be in the army overseeing the battle. You have medical skills. You are different from ordinary people. It's dangerous for you to stay on the island. Why don't you come to be my medic? I can refer you to my father. That's what he said, at least. Before the war, being able to treat a commoner was an honor
that I, as a countryside doctor, would never have dreamed of. But now, think about it. The commissioner wouldn't lack for good doctors around his person. But what about Yashisori Island? The only person the sick here can count on is me. So I'm not going to leave. I won't treat either side of the battle. My only enemy is a Tatarigami. Is there anything I can help you with? Nothing actually. Forget that. Yes. To be quite honest, I really need some help. I need some special plants to make medicines for treating the strange diseases caused by the Tatarigami. I can't say it will work for sure, but it can't hurt to try. Probably the problem is the plants I need have been contaminated by the Tatarigami, and they are mostly distributed in dangerous environments. If they are not cut off by water, the surrounding area is crawling with monsters, not to mention that the Tatarigami is particularly intense around those parts. For someone of my level of courage and ability, it'd be tough to handle it. And as a doctor, I dare not take that kind of risk to collect some plants. So I've had to resort to slow acting, cautious medicines and haven't had the chance to test out any improved remedies in a long time. Outlander, I see you brought a wing glider with you. You must be an experienced traveler. I'm sure you'll be able to deal with the dangers like this. So I hope you can help me gather the right ingredients in this location. Come meet me here once you've gathered the plants. Don't worry about the work. Although it's an assignment given by a stranger, I hope you will consider it. Thank you very much. By the way, please be careful on the way. इसको नाकू बीट्स चाहिए. Oh, you're here. Gather the herbs I mentioned. हाँ भाई 18 है नसीब से. Whistle dance. तूने वो whistle dance की वीडियो देखी क्या अभी? इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे बनाई थी. चल इसको गिव करते हैं, देते हैं नाकू भी. Yes, stems and leaves are all intact and they are still fresh. Thank you very much. That's all? Good. Yes, that's enough. Now I can start researching some new remedies. Thank you again for your effort. Here is the reward I promised you. I hope it's not too paltry a sum for you. By the way, Outlander, excuse me. I've troubled you so much. But I still don't know what to just call you. You can just call me Thandale. Thandale, if you're interested in helping me again, please come back again later. Of course, I'll compensate you fairly. Aha. चल मैं इसको बाद में कभी बात करते हैं. इधर बिजली है बिजली. Yuko. Isa. किधर गया वो? किधर गया वो तनुकी? Ika, 風の行く先よ。ほれ。心配無用。よっ。ほれ。くだらない。ここまでやはりダメだったか。しっ。किधर है वो तनुकी?よっと。
いざ風の流れる方へ。せい。よっ。 चल वो तनुकी को छोड़ के ये बिजली को ही पकड़ मैं तो फोकस करते हैं। はっ。しっ。戻れ。風よ。せい。よっと。いざ。それ。 Yuzo, hi there. Who are you? I'm a worker who was recruited by the Sun government with a troop from the Tatara Tsunami Kage furnace rules. I now work at the camp. The Vision Hunt decree has brought pain and suffering to many people. It's no surprise that after the Tatara Tsunami workers provided refuge to people bearing visions, they'd have grievances against the shogunate. Though the Sangonomiya resistance may seem weak, they are 100 times stronger than the cold, unfeeling shogun. My powers may be limited, but I'd like to contribute to the resistance and help teach the shogunate a lesson. What can you tell me about the resistance? I heard that the Sangonomiya Kokumi, the commander of the resistance, is both wise and a master technician. It was due to her excellency's amazing directives and battle instincts of General Goro that the shogunate wasn't able to secure an advantage during the course of the battle. It's all thanks to them that the Sangonomiya troops have managed to make it to this day. अच्छा तो फिर ये जो एनकेम्पमेंट के बदले रेजिस्टेंस का है। ये रहा बिजली का। Travelers passing through. If you have any questions about this fort, please go to the Mosojin Gorge and talk to Mr. Kaji about it. The handwritten. Please tell Mr. Kaji we've tried, but unfortunately, maybe we can find it somewhere nearby. Please tell Mr. Kaji to come to the refuge as soon as possible. He is dearly missed by his family. This Mr. Kaji seems to be pretty concerned about the stone lanterns. Why don't we go to Mosojin Gorge and ask him? Yuko. Hop. Sore. क्या ये इधर छुप के बैठा है? सही.
よっとそれよっよっとはっभाई कितना उड़वाएगा तू?雷を恐れる凡人が結構いる。我には理解できない。珍しくもなん風の赴くままに पूरी वैली इसने क्रॉस करा दी सिर्फ एक छोटे से चेस्ट के लिए। अरे बाबा よっ諸行無常 भैया इधर से निकलो, बहुत बुरी मार खाओगे वरना। सबको हील कर लिया। एक ये जगह देखते हैं क्या है, मार्क करके रखी है मैंने।それいざしっいざ行こうはっअरे वो हामायुमी वो वाला किधर है? ये है। ये हो सकता है।これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。
सही जगह यही है। मैं शायद मार्क करना भूल गया था। Mysterious conches. Isa. Kakashi. अरे भाई मर जाना है क्या, तेरे को लड़ने का है। Yuko. Sei, sokura. Se. 再生予定 Mai. Ha, ha, yo. Isa. और पानी में डूब नहीं होता। 風の行く先を燃えろ。ほれ。風の赴くままに。はっはっ。無駄だ。くだらない。ここだ。 अब मर क्यों नहीं जाते?無駄だ。魔物は雨だからって休んだりしない。行くぞ。 मिस्टर ताकेरू भाई कौन आ गए यार, इतनी मुश्किल। もみちばが散らまくをみんながそばにいてくれ。せい、そこだ。 मतलब इनको पता है पिटना है आके, ये लेने आते हैं। Are you a traveler? Ah, you've come at a good time. I have some good news for you. Does this involve the treasure chest? That's right, it's a treasure chest. They are filled with all kinds of treasures, carefully gathered by me. For just little something in return, you can open the chest and get your hands on the treasures inside. You want more? Ha ha ha. Actually, I don't want any more. What I want is a kind of conch. You should be able to find plenty of them around the beach. If you want to open the treasure chest and get your hand on what's inside, bring me some of those conches in return, in exchange. But I'm going to tell you what's inside. What treasure? I'm not going to tell you what's inside. What treasures you end up with will come down to how lucky you are. What do you think? If you want to open this chest, just hand me some conches. How's it going? Have you got some conches for me? ये ले भाई. Nice one. These are just the kind of conches I wanted. Go ahead, pick a treasure chest and open it. Only one? Can't I open all of them? Haha, these chests are one at a time, I thought. Okay, go ahead and take your pick. Best of luck. That's right. The cabbage दिया बंदे ने. I take if you opened one of these chests. Haha. I hope you got lucky. So you're collecting these conches? Bingo. Yes, I'm collecting them. But I can't tell you for why for now. Is there something special about them? From a business point of view, there most certainly is. Conches that were once influenced by Tataragami. Haha. They are sure to fetch a good price. Ahem. Anyway, you provide me with this conches, I provide you with chest. Got it? Anyway, that's your opportunity this time.
around, used up. If you want to open another chest, come back with some more conscious later on. ये 7 बार करेंगे तो इधर से हमायूमी बोन मिलेगा. To do some business. This house looks familiar. Is that so? Wow. That's quite a coincidence. But even if the house looks the same, the business I do here is unique. ये लीवे के अंदर भी海を सेम 渡る हाउस 時の雷雨と比べれば है शायद से. この程度は意味も介さん。風を知れ行こう。いざ行こう。いざ風の赴くままに。しっほっ。I think आज के मतलब एक दिन में एक ही बार कर सकते हैं वो. ठीक है, अभी नारुकामी श्राइन जाके देखते हैं. साकुरा ट्री का श्राइन. いざ行こう。 Lisa, Luca. Oh, offer rewards. Oh, please. इधर 3 है, इधर 7 है. Do you want a fortune slip? Gee, she's so cool. Yes, I'd like one. Got it. Here's how it goes. First, shake this thing over here. Isn't this called a fortune slip box? Yes, a bamboo slip will drop from it. Give it to me and I'll give you a matching strip of paper. I'm pretty sure they say it's a fortune slip. Whatever. Paimon's got a question. If what we do here... What do we do if we get one that means bad luck? It's fate. You got a problem with that? Huh? Eh? Isn't there that shelf-like thing outside we can use too? Shh. Did she seriously just... Shh. क्या है इसको? बहुत attitude है. Let me see. Alright, so it's like this. Tie the inauspicious slip onto the fortune slip hanger to change ill fortune to good. Ah, right. If you get a slip with ill fortune, just tie it to that shelf. That will do. Huh? But a bunch of... No, sorry. We at the Grand Narcom's time are most gentle indeed. Even if you should draw a slip with bad luck, you shall have a chance to turn it around. Something about this doesn't seem right. Go ahead. Let's go and draw a slip. इधर वाली बंदी गायब हो गई है. Open it. This shrine really seems to lack the whole divine affection thing, huh? Yeah. Let's see how your luck's going. Ah, yes, you can only draw one silver. Please remember that.
It's too tiring otherwise. Wait, no, if not, you won't be able to use the fortune slip hanger too. No, that's not right either. What was I supposed to say? Fortune slips are the manifestation of our orphans' will. It is our place as mortals to respect it and do all we can. See? Elegantly put. So please remember, you can only draw one fortune slip each day. मिला क्या पर? Being with Paimon will certainly bring you good fortune. なる神様、あの人が無事でいられますように。信号の先続き。 तो ये भी हमने किया ना. The blade that has been tempered for 10 years will shine bright today. Your misfortune is gone and you are rising from the pit of despair. You've trained hard for years without showing your skill, but today is a perfect opportunity to showcase your abilities. If you encounter obstacles, do not fret. Draw your sword without fear and fight with all your might. Your lucky object for today, Nacho Sea Ganoderma. The sea Ganoderma is a weak creature that must endure years of hardship to grow into a sea Ganoderma. So sea Ganodermite. People who strive toward their goals will surely reap the fruits of their labor. Isa. Next. चलो कामिसाटो एस्टेट में जाते हैं. कामिसाटो वाला क्वेस्ट चालू करते हैं क्योंकि इनाजुमा का अभी तक हमारा. Do you need help with anything? What is this place? This is the mansion of the Kamisato clan of the Yashiro Commission. It is also the place where the commissioner works. Outsiders aren't usually allowed here, but I remember that you are a guest of Miss Kamisato, in which case please be my guest. You're pretty relaxed. Well, you're right. As a guard of the Kamisato mansion, I shouldn't really let my guard down. I have a friend who is also a guard at the Tenryu Commission. He told me that he was very worried about those people affected by the Vision Hunter decree seeking revenge. But now that I think about it, the peaceful Kamisato clan is far safer than the other two commissions who made a lot of enemies. This might also be because of Mr. Thoma, because Mr. Thoma is too reliable. I've always felt safe here. Haha. About Thoma. When Mr. Thoma first came to the Kamisato clan, people suspected him on account of his being an outlander. But from my observation, Mr. Thoma is steady and friendly, and he is truly reliable for me. I mean, why else would he be the trusted assistant of Commissioner and Miss Kamisato, right? Shrine Maiden. Oh, Haru. Yuko. ये रहा. Why? Hello. What is your business in the Yashiro Commission? About yourself? I am Madarame Hyakube, an advisor who reports to the Commissioner Kamisato of the Yashiro Commission. The commissioner is very busy at the moment, so you may talk to me if it's not something urgent. Feel free to ask for help if you need anything. You are a respected guest of the Kamisato clan, and I shall do my utmost to help you. भाई मेरे को इधर के क्वेस्ट दे दे. About the Yashiro Commission then. The Yashiro Commission, the Kanjo Commission, and the Tenryu Commission are known as the Tri-Commission. The Yashiro Commission is different from the other two commissions. It's responsible for cultural affairs in Inazuma, like offerings to the shrine, ceremonial affairs, publishing books, and so on. Because of that, we often hear the various wishes of people of Inazuma. Miss Kamisato is a very kind lady. She has persuaded the commissioner to allocate funds and resources to help grant the people's wishes. But since the requests concern many different aspects of life here, we usually have a shortage of manpower when things get busy. Now that I mention it, would you be interested in helping us out? You will be paid fairly, of course, once you have more experience and a better reputation.
You will receive more important and better being commission. I want to. भाई दे दे. いざ 風を知れ ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा. それ बहुत तनुकी भी छुपा हुआ है इधर. हेलो तनुकी. はっ それ しいざ よっ行こう しっと風よふっせいはっ अरे यार मैं नीचे कूद गया वापस. よっとはっはっそれそれはっ参るいざ Lucky item for today. と風の行く先をはっはっふっ風を知れそこだくらえ हेलो. वापस आ गया रणबीर. चलो कानी साटो एस्टेट में जाते हैं. और स्ट्रीम मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे ही बंद करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर ये स्टोरी क्वेस्ट को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तो रणबीर के अलावा और कोई वीडियो देख रहा हो और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो. रणबीर तेरे को भी पसंद आ रही है तो तू भी लाइक कर दे. और अगर आप मेरी वीडियोस और देखना चाहते हो बाद में तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो. अभी के लिए बाय बाय.